Okay, as discussed in the last lecture, we are going to start the lecture with chemical bonding. And again, who are joining for the first day, you are allowed to ask all the doubts you are getting during the lecture. So don't hesitate in asking any doubt. Like last time I told you that we need to be besharam in asking the doubt, because if you want to learn something, you need to be expressing yourself. है ना? So that's one thing. Second thing is, you have come here because you have not understood somewhere. है ना? That was the case. Normally that is the case because you have attended some lecture and you have not understood. If you are doing the same thing again here na, तो फिर उसके बाद तो this class will not be fruitful for you, है ना? So we need to be very clear that if I am getting any doubt, even if a single word is not clear to me, I'll say that कि सर मेरे को ये बता दो फिर से वापस, है ना? Okay, so I'm giving you that promise that all your doubts will be resolved here. That's one part. Now, while dealing with the chemical bonding, and in every chapter you will see that I'll always be giving you first the syllabus so that we know the limitation of the syllabus. Because science has no end, है ना? पढ़ने के लिए तो कितना भी पढ़ लो, मार्वल वाले तो पैरेलल यूनिवर्स में भी चले गए ना. So we need to clear about कि what is our syllabus and what is our limitation of the syllabus, so that we understand that कि हम लोगों को मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री सब मैनेज करना है ना. And while doing that, you need to get that efficiency ki I'm getting maximum marks possible according to my capability, है ना? तो ये करने के लिए always see the syllabus, and you'll find that ना many times ना faculties will be teaching you a lot. मतलब कुछ भी पूछ बता रहे होंगे, which is not even in syllabus, just because they want to show you कि मेरे को बहुत आता है. I have no such inferiority complex कि मुझे बताना है कि मेरे को बहुत आता है. Whatever I am knowing according to the syllabus, I will be telling you that only. थोड़ा बहुत आगे पीछे जाएंगे. Obviously, you are attending some coaching institute, so you have to deal with the paper of the coaching institute also. So I'll be telling you कि what is the syllabus, which is actually not in syllabus, but it may be asked to your paper in the coaching institute also. ठीक है? तो we'll see that part also कि कहीं कहीं extra जहाँ रहेगा तो वहां पर जाएंगे. But if you see the syllabus clearly, like I told you, they'll be very specific. Like if you see about the covalent bond, they are talking about orbital overlap. We'll understand that today itself. Covalent bond के बारे में जो पढ़ना, that is having hybridization including s, p and d orbitals only. That means f orbital का role नहीं है इधर अपने syllabus में, है ना? That's one part. Molecular orbital energy diagram for homonuclear. देखो, that means we don't have to see NO का क्या होगा, NO plus का क्या होगा. थोड़ा बहुत मैं बता दूंगा, but obviously we need to know the syllabus, and that too diatomic species up to Ne2 only. That means CH4 या C2H6 को molecular orbital से अपने को नहीं पढ़ना है. That is not in the syllabus. Now it is saying hydrogen bond, that we'll see at the end of the chapter. Polarity in molecules, we'll talk about all these things. VSEPR model and shape of molecules, ये बहुत ज़्यादा लंबा discussion जाता है because we need to deal with more than 100 molecules, and you'll see that कि once you get the idea how to deal with these things, so you'll be doing it by yourself only, है ना? In that also linear, angular, triangular, square planar, pyramidal, square pyramidal, trigonal, bipyramidal, tetrahedral and octahedral. ठीक है? तो we need to know all these shapes कैसे होते हैं, कौन से molecule में आएंगे. We'll be talking about that also, but this much is the only syllabus according to JEE Advance. Mains में जो NCERT है, that is the mains का syllabus. No, ठीक है? So now we'll start it, but before going to that, if you remember, हम लोगों ने last class में जो discussion किया था, I asked you one question. Do you remember what was the question? Do you remember जिन लोगों ने attend किया था? Last में मैंने just एक question बोला था कि just find out what is that part. There was a term. Orbitals. हाँ, what is orbital? Any answer you have got? Sir, I'm still on the same answer. Haji, same answer. Okay. So I'll tell you in short, but again, you have to go in detail to understand that what I'm talking about. Now, last class में I just gave you the introduction of the atomic structure में how was the story going, how we moved from Thomson to Rutherford to Bohr to then the Bohr's extension, that was Sommerfield's extension, then De Broglie, Heisenberg ने आए, फिर quantum mechanics आया, and then we entered into the latest model which is called quantum mechanical model of atom, है ना? In that part, we need to understand two things because we are going to deal with orbital. The first word itself in this chapter का syllabus is orbital itself, है ना? So we need to be slightly clear about that part. ऐसे normally काम चल जाएगा, but if you go in more detail, तो तुमको वो बात अगर समझ में आती तो फिर ज़्यादा अच्छा रहेगा, because many times I'll be using that concept also. So what is orbital? We need to understand that कि when we entered into quantum mechanical model, it is totally a mathematical model.
तो first instruction which I give to my student is do not ever try to imagine anything in quantum mechanical model. जो इमेजिन करवाते हैं वो गलत करवाते हैं. यू आर नॉट अलाउड टू इमेजिन बिकॉज इट इज टोटली मैथमेटिकल मॉडल which cannot be imagined. Whatever you imagine, that is based on the classical mechanics. You have to understand that. दिमाग में जो कुछ भी सोच लो, it will be following Newton's law of motion. कुछ भी सोच लो अदर देन रोहित शेट्टी का मूवी. ठीक है. सो वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट दैट कि इमेजिनेशन नहीं काम करता बिकॉज इट इज टोटली मैथमेटिकल. नाउ व्हाट इज दैट मैथमेटिकल मॉडल? Two things were incorporated because of de Broglie's theory, जिसको हम लोग de Broglie बोल देते हैं because we write that, but pronunciation is de Broglie. तो de Broglie ने हम लोगों को बोला था matter will also have dual nature, है ना, wave nature as well as particle nature. That was one thing which was incorporated. The second thing which was incorporated was the Heisenberg's uncertainty principle, because he told us that you cannot ascertain the momentum and the position simultaneously, and because of that you cannot have the identified trajectory for the motion of the electron, है ना. Whatever trajectory for the motion of any particle you can draw ना, वो तभी होता है when you know every time कि particle का position क्या है and उसका momentum या velocity क्या है ना. When you ascertain both the things, then only you can find out कि उसका trajectory of the motion क्या है. Like we had in Bohr's model, electron in hydrogen atom in first orbit was at a distance of 0.529 angstrom and it was moving with a speed of 2.188 meter into 10 raised to 6 meter per second, है ना. That was the thing in Bohr's model. That means Bohr model में we were having a particular identified path which was a circular path. There was a nucleus and electron was moving in uniform circular motion. So this distance was known, speed was known, and everything was known, and that's why we had a trajectory. The first thing which is not allowed in quantum mechanical model is this trajectory of the motion of electron. That means you cannot ascertain the position and momentum of electron simultaneously. That's why we cannot talk about the path for the movement of an electron. ये बात करना ही allowed नहीं है in quantum mechanical model. Now, then what is allowed? So, दो चीजें, like I told you, electron will be treated as a wave, and that too particularly standing wave, you must be knowing. So that's one part. Second thing is, now we cannot be deterministic in nature. Like I told you, Newton's law of motion follow करते हैं ना. If this is the floor and if I'm dropping a ball, अभी kinematics तो किया होगा physics में, I can calculate that in what time this will be hitting this floor and what will be the speed of the that ball while it is hitting the floor, है ना. We can do that calculation kinematics से. And while doing that ना, it is going to cross every level. ऐसा नहीं होगा कि यहाँ से गायब हुआ अचानक से यहाँ आ गया, यहाँ से गायब हुआ अचानक से यहाँ आ गया. That is not possible, है ना. So classical mechanics is like that. It is deterministic in nature. But when we are talking about quantum mechanics, it is probabilistic in nature. And that's why तुमको पढ़ाया होगा. We always try to find out the probability of finding an electron inside the atom, है ना. We talk about that. अब इस पूरी कहानी में दो terms आते हैं. We have got a term of something called wave function, जिसको हम लोग ऐसा psi से indicate करते हैं ना. ऐसा कुछ term आया होगा. अब ये क्या है? तो normally we say that this is, we are going to use this term, these things, whatever we are discussing right now ना, we are going to use this in the chemical bonding for a deeper understanding. रट्टा मारने के लिए तो बहुत कुछ हैंडल कर लोगे, but if you understand it really well ना, तो फिर मजा भी आता है और मार्क्स भी आते हैं. By default मार्क्स बढ़ेंगे. So this is called wave function. What is that wave function? Anyone who knows what is wave function for an electron inside the atom? What does it mean? तुम लोगों ने बोला एटॉमिक आता है. That's why we entered into chemical bonding. Anyone who can tell me what is wave function? अच्छा, ये स्विच ऑफ मत करो यार कैमरा. मैंने बोला ना, दिस इज द क्लास वेयर यू आर, इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड देन ओनली यू कम. अदरवाइज डोंट टेक एडमिशन इन दिस बैच. आई एम टेलिंग यू, दिस क्लास विल बी टोटली इंटरेक्टिव. डू नॉट स्विच ऑफ योर कैमरा, है ना. आदि यू देयर? कार्तिक, मेरे को ये बोलना ना पड़े, मतलब आई एम नॉट दैट टाइप ऑफ फैकल्टी जो गर्दन पकड़ के पढ़ाता है. आई एम टेलिंग यू वेरी ऑनेस्टली, you need to be very interactive. You need to switch on your camera. Otherwise एक बार होगा कि मैं देखूंगा switch off रहेगा तो मैं हटा दूंगा सीधा बैच. Okay, तो just be very clear about that. This class is not forced class. अगर मन है पढ़ने का, मजा आता है पढ़ने में, इंटरेस्ट है जेई क्रैक करने में, then only you attend this class. Very clear. Okay? ये गर्दन पकड़ने वाली क्लास नहीं है कि क्यों नहीं पढ़ रहे हो, ऐसा क्यों कर रहे हो, वो वाली क्लास ये नहीं है. If you are really interested but you are not getting a good quality teaching, then only you come here. ओके, चलो. तो मुझे बार बार बोलना ना पड़े, मतलब आई डोंट लाइक दैट. जिसको पढ़ना नहीं उसे जेई नहीं होगा. आई एम क्लियरली टेलिंग यू. जिसका इंटरेस्ट है उसी से जेई होगा. तो ये भाग के उस
आई कॉल इट कि उस कंफ्यूजन में मत रहो कि यू आर कॉम्प्रोमाइजिंग इन द क्वालिटी ऑफ टीचिंग एंड देन यू आर गोइंग टू क्रैक द जेईई एडवांस पर्टिकुलरली, तो नहीं, सीधी सी बात है. Lakhs of people are there who are competing with each other and they are putting their best effort, I'm telling you, with the best quality of teaching they are getting. So that's why I'm telling you very clearly कि ये करना ना पड़े कि स्विच ऑफ क्यों कर दिया है, क्या कर रहे हो, सो रहे हो कि जाग रहे हो. नींद आए बोल दो कि नींद आ रही है, मैं सो के आऊंगा, बाद में देखो, सीधी सी बात. नॉट अटेंड द लेक्चर, है ना. ओके, व्हाट इज वेव फंक्शन, एनीवन? जस्ट पार्टिसिपेट इन द डिस्कशन ना. हो सकता है यू मे बी रॉन्ग, दैट्स ओके. यू आर अलाउड टू डू मिस्टेक्स हियर. दैट्स हाउ यू लर्न. एनी आइडिया व्हाट इज वेव फंक्शन? कुछ तो पढ़ा होगा एटॉमिक में. Sir, amplitude. हाँ जी. Amplitude, very good. So this is amplitude of electron as a wave. It was right answer. Of electron wave. Now when we say amplitude of electron wave, because we are treating electron as a wave, so it must be having some amplitude, है ना? That amplitude is indicated by this psi. So we have to name it, है ना? Somehow कुछ तो नाम देना पड़ेगा. That's why we are calling it wave function. Now this is amplitude, and you must be knowing that. बाद में another interpretation of this term was given by uh, a scientist called Max Born. Max Born was the scientist who told us that if I'm taking psi square, na, this is called probability density, which means it is probability per unit volume. And that's why I told you that quantum mechanical model of atom is probabilistic in nature. It is not deterministic. So we talk about कि probability कहाँ ज़्यादा होगी, कहाँ कम होगी. Whenever you are getting probability zero, so we call them, what is the name of that zone in which probability of finding electron will be zero? क्या बोलते हैं उसको? Node. Very good. And node will have two types. One is radial node, another is angular node, है ना. So what we do ना, देखो ये psi जो है ना, this is a way, this is a mathematical quantity which is considered to be what I say, that amplitude of the electron wave. I'll show you what kind of equation was given by Schrodinger. Schrodinger नाम सुना होगा ना, Schrodinger wave equation का ही solution हम लोग पढ़ते हैं ना. I'll tell you किस टाइप का equation था जो देखने से बहुत डराता है, but we don't need not to be afraid of that. ऐसा कुछ equation है, I'm showing you. जस्ट टू गिव यू द आइडिया कि किस डायरेक्शन में हम लोग बढ़ रहे हैं. अब ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, डिफरेंशियल इक्वेशन विल हैव मेनी सॉल्यूशंस, है ना. तो इनफैक्ट व्हेन द differential equation which is considered to be Schrodinger equation was solved, बहुत short में बता रहा हूँ because it will take 2-3 lectures to understand that quantum mechanical model. I am not going to give you that many lectures. If you are really interested, I'll be sharing the playlist of atomic structure also. वहाँ पे जाके visit कर लेना. I'll be sharing the notes also. And if you have got any doubt, always welcome to answer the questions, है ना. तो ये एक ऐसा मैथमेटिकल इक्वेशन है तो विच इज कॉल्ड डिफरेंशियल इक्वेशन दैट वाज सॉल्व्ड. अब ये इक्वेशन का जो मॉडिफाइड फॉर्म था, देखने से अजीब सा लग रहा है, तो फाइनली जो आया इक्वेशन वो कुछ ऐसा इक्वेशन था. ठीक है, दिस वाज द इक्वेशन विच इज कॉल्ड श्रोडिंजर्स इक्वेशन फॉर बिहेवियर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. अब इसको सॉल्व किया जाएगा ना, हमारी तुम्हारी औकात से बाहर है. लेट मी टेल यू वेरी क्लियरली. इवन इफ यू आर गोइंग फॉर वन डायमेंशनल वाला जाओगे ना, तो आईआईटी बॉम्बे में व्हेन आई वेंट ना, तो आईआईटी बॉम्बे के फर्स्ट ईयर के कोर्स में वी स्टडीड इट बट ओनली इन वन डायमेंशन. दैट मीन्स वन लाइन पे एक्स लिया, वाई जेड हटा दी. देन वी वर टॉट की हाउ टू सॉल्व दिस श्रोडिंगर इक्वेशन. द पर्सन हु इज टेकिंग इंजीनियरिंग फिजिक्स विल बी टॉट द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन इन द फोर्थ ईयर ऑफ आईआईटी. ओके, सो राइट नाउ आई एम टेलिंग यू कि ये अपनी औकात से बाहर है, बट द गुड न्यूज इज नॉट इवन इन सिलेबस, अपने सिलेबस में भी. तो अच्छी बात यह है कि सॉल्व करना इज नॉट इन आवर सिलेबस, बस सॉल्यूशंस पढ़ना, सॉल्यूशंस की एनालाइज करना, एनालिसिस करना इज इन आवर सिलेबस. तो शॉर्ट स्टोरी कि दिस इक्वेशन वाज सॉल्व्ड एंड वी गॉट इनफाइनाइट डिस्क्रीट सॉल्यूशंस. Okay, so every solution will be representing the variation of amplitude of electron wave in three-dimensional space around nucleus. Every variation was called an orbital. Is it okay?
तो इतना जो हम लोग वो डब्बा पढ़ते हैं ना, ये शेप है, वो शेप ऑफ ऑर्बिटल है. व्हाट इज ऑर्बिटल? तो शेप ऑफ ऑर्बिटल की भी बात करेंगे. बट व्हाट इज ऑर्बिटल? इट इज अ पर्टिकुलर मैथमेटिकल वेरिएशन फॉर द एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम. तो व्हेन वी से इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन 1s orbital, it will have a particular variation of its amplitude in three-dimensional space. When I say electron is now in 2s orbital, it will have another set of variation. I'll show you some of the variations just to give you the idea कि किस टाइप के solutions आए थे. Let me see if it is, yeah. जैसे I'm giving you one idea कि देखो किस किस टाइप के ऑर्बिटल से सॉल्यूशंस आए थे. I'll be giving you some जो अपने सिलेबस में वो सब इनफैक्ट I'll give you right now only. These were the solutions. Okay. So when I write y and r, na, actually psi is nothing but r times y. Okay. And we have got, तो like देखो, अगर 1s ऑर्बिटल है तो r times y will be a function of r and theta and phi, ऐसा कुछ आएगा ना. r theta phi you must be knowing है ना. तो ये जो सॉल्यूशंस आए ना, यही सॉल्यूशंस को बोला गया कि दीज आर इंडिविजुअल ऑर्बिटल्स. दैट मींस अब इसी का स्क्वायर करूंगा तो विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, दैट मच इनटू वॉल्यूम विल गिव यू प्रोबेबिलिटी. ठीक है. तो अब मैं इसको समराइज कर रहा हूँ. वट एवर वी हैव लर्न, अगेन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम इफ आई एंटर इनटू दिस जोन. We can enter sometimes during the revision lecture, but I'll be sharing the notes of chemical bonding as well as I'll be sharing, atomic structure, and I'll be sharing the playlist also. Videos are already there, so I'll give you that. कहीं पर डाउट रहेगा तो जाना वहां पे, और कुछ डाउट रहेगा तो लेके आना वापस, है ना. तो we'll be talking about these things. When we are talking about shape of orbital, what does it mean? प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का कुछ वेरिएशन होगा. साई वी हैव गॉट है ना, आर इंटू वाई हर ऑर्बिटल के लिए अपने पास अवेलेबल है. उसका स्क्वायर कर देंगे तो विल बी गेटिंग प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, है ना. साई स्क्वायर को यही बोला है. ये जो साई स्क्वायर का जो वेरिएशन है इन थ्री डायमेंशनल, इट वाज इंडिकेटेड बाय सम डॉट्स वेयर द प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाज ग्रेटर, वहां पर डार्कर डॉट दिया. जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाज लेस, वहां पर लाइटर डॉट दिया. जहां पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी वाज जीरो विच इज नोड, वहां पर कोई डॉट नहीं दिया. और ऐसा करके एक थ्री डायमेंशनल पिक्चर आएगा ना. That three-dimensional picture was considered to be the shape of orbital. But when you see any orbital ka equation na, its value will be lying from 0 to infinity, but we cannot cover 0 to infinity, है ना. मेरे हाथ में जो उंगली पे जो एटम है, उसका इलेक्ट्रॉन ढूंढने में दादर थोड़ी जाऊंगा, है ना. राइट नाउ आई एम इन खारगर, तो खारगर से मैं दादर थोड़ी जाऊंगा, है ना. तो दैट्स व्हाई प्रैक्टिकली इट वाज थॉट कि ये 100% तो कवर नहीं कर सकते. एंड दैट्स व्हाई इट वाज डिसाइडेड कि द रीजन इन विच 90 to 95% जैसा प्रोबेबिलिटी कवर हो जा रहा है ना, सिर्फ उस रीजन को देखो. एंड दैट्स व्हाई वी हैव गॉट अ फाइनाइट साइज ऑफ द ऑर्बिट. थियोरेटिकली इट शुड बी इनफाइनाइट साइज बिकॉज इट इज लाइंग फ्रॉम जीरो टू इन्फिनिटी, है ना. इन्फिनिटी पे जाके देखो सारे वैल्यू जीरो होने वाले. And that's why theoretical size of the orbital will be infinite, but practically it was decided कि ठीक है उतना नहीं जाने का, 90 to 95% कवर करो. And that's how we can get the finite shape of the orbital जो दिखता है अपने को, like 1s or 2s or 3s will be spherical in shape, which is also called non-directional, है ना. It is spherical or non-directional because देखो जितने भी s orbitals दिख रहे हैं उसका y वाला फंक्शन देखो, there is no theta or phi in that. बट इफ यू सी एनी पी वाला या डी वाला, उसमें देखो थीटा फाई या एक्स वाई जेड ये सब दिखेंगे. एंड दैट्स व्हाई विल बी हैविंग डिपेंडेंस ऑफ द एंगल. एंड दैट्स व्हाई एस ऑर्बिटल्स आर कंसीडर्ड टू बी स्फेरिकल. P or D or F orbitals are not spherical, they are directional in nature. Any doubt in that? I'll be showing you some of the shape also. Let me see if I'm having those shape. Yeah. Okay. So S orbital, like I told you, those are spherical in shape. P orbitals का shape, anyone? Can you tell me p orbitals का shape कैसा होता है? Dumbbell. Very good. So I'll be showing you the shape of those orbitals. Like if I have got s orbitals, they look like this. And what are these variations? These variations are the variation of probability density, which is psi square का variation. No, बीच बीच में white zone जहां दिख रहा है वहां देखो उसी को node लिखा हुआ है ना. And the colors are indicating that they are having different sign of the psi. Psi can be positive or negative. 1s के लिए it is always positive and that's why सिर्फ orange दिख रहा है. But जहां orange और blue दोनों दिख रहा है
वहां समझ लो ऑरेंज इज इंडिकेटिंग द पॉजिटिव साइन ऑफ साई, ब्लू इज इंडिकेटिंग दैट द साइन ऑफ साई हैज बिकम नेगेटिव. Okay, so this is the indication. So these are the shape of s orbitals. Similarly, again, नोट बहुत कम करना है बिकॉज जस्ट आफ्टर द क्लास आई विल बी शेयरिंग यू द नोट्स डायरेक्टली. जो वट एवर वी आर डिस्कसिंग ना, वो तुमको शेप तो समझने पे ध्यान देना है. वी नीड टू बी वेरी क्लियर अबाउट कि अभी जितना भी डिस्कशन हो रहा है ना, जस्ट फोकस ऑन द अंडरस्टैंडिंग. नोट्स विल बी गिवन टू यू, वीडियो विल बी गिवन, तो डोंट वरी अबाउट दैट. बट इफ यू हैव गॉट एनी डाउट और इफ यू थिंक दैट कि समथिंग एक्स्ट्रा यू हैव गॉट ना, तो उसको नोट कर लेना. देयर इज नो प्रॉब्लम इन दैट. These are px, py, pz, and you can see that कि एक प्लेट जैसा, व्हाइट प्लेट जैसा दिख रहा है, which is not having any color, है ना, ऑरेंज या ब्लू कुछ नहीं दिख रहा है, तो दैट इज द नोड, है ना, नोडल प्लेन है वो, एंगुलर नोड है. ठीक है, तो दीज आर थ्री है, टू पी एक्स, टू पी वाई, टू पी जेड. वैसा ही देखो, इफ आई एम टॉकिंग अबाउट जस्ट एक थ्री पी जेड या थ्री पी वाई या थ्री पी एक्स की बात मैं करूंगा, तो ऐसा ही डम्बल शेप आएगा, बट इट विल हैव अ स्फेरिकल नोड ऑल्सो. नंबर ऑफ स्फेरिकल नोड कितने होते हैं, या रेडियल नोड, एनीवन? व्हाट इज द नंबर ऑफ रेडियल नोड्स? कुछ तो रट्टा मारा होगा क्वांटम नंबर के टर्म्स. N minus L. N minus L minus 1, that is the number of radial or spherical node. And number of angular nodes? N minus L. No, that is simply L. No, N minus 1. N minus No, 1. it is simply L. The total number of nodes, because it is radial node is N minus L minus 1, and angular node is L, and that's why total nodes will become N minus 1. Okay. Now I'll be giving you the shape of 3D orbitals, which is very important. In fact, I'll be using it in many places, इंक्लूडिंग द चैप्टर कॉल्ड कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, जो 12th क्लास में आएगा तुम्हारे लिए. वेरी इंपॉर्टेंट. यहाँ भी देखो दो दो प्लेट्स दिख रहे हैं ना, दो दो प्लेन दिख रहे हैं, इन विच द कलर इज नॉट प्रेजेंट, एंड दैट्स व्हाई वी आर कॉलिंग देम नोडल प्लेन. कैन वी से 3D z स्क्वायर इज हैविंग टू नोडल प्लेन्स? 3D z स्क्वायर, दिस इज 3D z स्क्वायर, है ना. these are 3D xy, 3D xz, 3D x square minus y square, 3D yz. All of these are having two plates, that means two planes in which probability is not there. तो इलेक्ट्रॉन विल नॉट बी प्रेजेंट इन दोज प्लेन्स, है ना. कैन वी से दैट 3D z स्क्वायर इज हैविंग टू नोडल प्लेन्स? 3D z स्क्वायर के लिए L का वैल्यू कितना है? एनी 3D ऑर्बिटल इज, और एनी D ऑर्बिटल इज हैविंग L का वैल्यू 2, है ना. इफ L का वैल्यू 2 इज देयर, तो इट हैज गॉट टू एंगुलर नोड्स. ओके, व्हेनेवर यू आर नॉट गेटिंग एनी कंसेप्ट क्लियर ना, तो जस्ट आस्क मी. इसके लिए भी देखो L का वैल्यू इज 2 ओनली, तो विल बी गेटिंग टू एंगुलर नोड्स. ऑल these d orbitals are having two angular nodes, but when we are talking about this or this na, so these are having two nodal planes. But when you see 3D z squared, these are not, these are angular nodes. These white plane, the white zone are no angular nodes, which has been represented here, but these will not be called nodal planes because these are not planes, you know, these are curved surface. These are actually conical surfaces. Is it okay? And that's why we'll not call them, we'll call them angular nodes, but we'll not call them, but not nodal planes. So some tricky question can be there also. अपन रट्टा मार लेते हैं कि ठीक है, एंगुलर नोड को ही नोडल प्लेन बोलते हैं. एंगुलर नोड विल बी कॉल्ड नोडल प्लेन ओनली इफ इट इज अ प्लेनर सरफेस, है ना. तो 3D के बाकी सारे ऑर्बिटल्स के लिए they have got two angular nodes which are planar surfaces, and that's why they'll also be called nodal planes. But 3D z square is having two angular nodes. Those are conical surfaces, so they are curved. That's why they'll not be called nodal planes. Okay. Any doubt up to this point? Because we are going to discuss with this shape of orbitals only. आगे जाकर जब आगे की थ्योरी पढ़ेंगे, start will be very simple, but आगे जाकर जब जाके पढ़ेंगे तो then we are going to utilize these shapes also, है ना. So we need to be very clear about that. Any doubt, just ask me. Any doubt? And one extra information I gave you, because online class में we can have the colored diagrams also, and that's why you can see that की colors are representing the sign of psi, है ना. So like I told you, this says कि यहाँ पे plus sign है, यहाँ पे minus sign है, यहाँ पे minus sign है, यहाँ पे plus sign है. Okay, वैसा ही यहाँ देखो, यहाँ जो मैंने बोला, is it is always having the plus sign. This is the sign of psi, not psi square. This is the distribution or variation of psi square, but this is sign of, जो मैं साइन दिखा रहा हूँ, कलर दिखा रहा हूँ, दैट इज साई. और ये जो वेरिएशन है, दैट इज ऑफ साई स्क्वायर, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी का डिस्ट्रीब्यूशन.
And that's why देखो probability density for s orbital is not zero at nucleus, इसलिए you can see that color is present at the nucleus also, but probability will not be finite, it will be zero, है ना? Any doubt at this point? Any doubt? So it was just the basic information about the orbitals. Now we are going to enter into the chapter called chemical bonding. सबसे पहले, what is chemical bond? When we say some bonding is present between two atoms, what do you mean by bonding? Anyone? Anyone? Karthik? Can you tell me what is chemical bond? कुछ तो basic idea होगा schools वाला या जो भी पढ़ के आए उससे. What is chemical bond? Exchange of electrons between two elements or Okay, mutual sharing of their electrons. very good. Okay. So just you will tell me anything else? Anything additional to that? Um, we can say it's kind of like a force that holds two electrons in a stable state. Okay, very good. Sharman, any idea what is chemical bond or anything you want to add? Arush, It holds Razik, together two atoms by mutual sharing of electrons or transfer of electrons. very good, very good, very good. Adi, Razik, Adi, So it is kind of a linkage or force between two atoms to hold them as a stable molecule. okay, Razik, So it is holding two atoms in a forming a molecule. okay. So basically, roughly, you all have the idea what is chemical bond. And when you are saying the sharing or the complete transfer, that means we are talking about two types of bond which are covalent and ionic. तो ये basic idea तो है अपने आप को, है ना? But what happened now when they were talking about the 1 minute? Yeah. So when they were talking about the theory ना कि how molecules are formed and why molecules are formed, तो बहुत सारी theory आई historically, like you have been taught the atomic structure ना, जिसमें पुरानी theory जो थी it started with the discovery of electron, then Thomson model आया, फिर Rutherford आया, फिर हुआ क्या ना कि every time the theory was modified a little bit, like there was some element of truth that was carried in the next theory, but the remaining things were rejected, है ना? तो वैसे ही केमिकल बॉन्डिंग की भी हिस्ट्री ऐसी है कि व्हेन दे स्टार्टेड विद अ वेरी बेसिक पॉइंट कि बॉन्ड क्यों बनता होगा, फिर उसके बाद उसमें कुछ मिस्टेक निकला तो फिर उसको करेक्ट किया, या फिर कुछ साइंस डेवलप हुआ तो देन दे मॉडिफाइड द थ्योरी. तो ऐसा करके हम लोग भी चलने वाले हैं. तो इट विल गो इन हिस्टोरिकल मैनर. वी आर नॉट worried about the year or the scientist who discovered that part. We are not going to be worried about that, but we'll go in that manner only कि पहले क्या आया फिर बाद में क्या है. But I told you that syllabus, if you see the syllabus of JEE Advanced ना, it directly talks about the orbital overlap and covalent bond. तो देखोगे बहुत ही क्विकली विल बी मूविंग टू दैट कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप. पीछे का चीजें बेसिक है, वी समझेंगे, बट अल्टीमेटली वी हैव टू मूव टू दैट कंसेप्ट ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप, जिसकी बात हम लोगों ने करनी चाहिए थी, इसलिए मैंने तुमको ऑर्बिटल का पूरा एक डिस्कशन दिया. ठीक है. तो नाउ व्हेन वी से केमिकल बॉन्डिंग, whenever I'll be giving you theory तो बाद में बोलूंगा कि इसकी कुछ लिमिटेशन थी, then the new theory came. But one theory which was always valid was the theory in terms of the potential energy. So we'll talk about that. But सबसे पहले देख लो कि when we say chemical bonding, it is basically the interaction of two atoms present in a molecule. Potential energy of a system decreases as a result of formation of chemical bond. Okay. तो ये थ्योरी जो है ना, इसकी थोड़ी सी बेसिक में समझा देता हूँ. फिजिक्स में क्या चल रहा है अभी? व्हाट इज द चैप्टर गोइंग ऑन इन फिजिक्स? Work, power, and energy. Okay, so do you know the definition of force? What is the mathematical formula for force? Anyone? Mass into acceleration. Okay, that's one theory. In terms of potential energy, do you know any definition about the force? नहीं, ठीक है, मैं बता देता हूँ, आगे आएगा. Whenever you will be taught that work, power, energy नहीं आया ना अभी तक, आ गया तो वहां पे आएगा. अदरवाइज आई विल टेल यू व्हाट इज द डेफिनेशन. We say that force is minus, ये मैं d को डाउ जैसा थोड़ा टेढ़ा लिख रहा हूँ, इसका मतलब है we are doing the partial differentiation. So this is the basic definition of force, where this is potential energy. तो होता क्या है ना कि if you are having u का variation with this distance, if it is
increasing, then du by dr will be positive. So F will have negative sign. That means it is the attractive force. So we are saying, in other word, we are saying that whenever attractive forces are acting, the potential energy will be decreasing. Is it okay? Again, I'm telling you, if force is attractive, we say that F is negative. If F is negative, then du by dr will become positive, and du by dr positive होगा तो R बढ़ने से U बढ़ेगा, R कम होने से U कम होगा, है ना? That's one part. Now, दूसरा, if the force is repulsive, then force is positive, so minus du by dr is positive. So du by dr will become negative. That means if R is decreasing, U will be increasing. ठीक है? So I'll give you the theory. If net force is attractive, then we say F का साइन जो होता है वो पॉजिटिव लेते हैं, एंड देन वी से दैट, सॉरी, अट्रैक्टिव है तो नेगेटिव लेंगे. दैट मीन्स माइनस du by dr is negative, which means du by dr, डाउ को मैं du बोल रहा हूँ बिकॉज अभी तुम लोगों ने पार्शियल डिफरेंशिएशन पढ़ा नहीं होगा, तो सिंपली अंडरस्टैंड दैट इट इज द डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू r ओनली while considering all the other variables to be constant. ठीक है? तो this is positive. It means u, अगर ये पॉजिटिव हो रहा है, इसका मतलब r बढ़ने से u बढ़ेगा, r कम होने से u कम हो गया ना. दैट इज द डेफिनेशन ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. दिस इज इंक्रीजिंग फंक्शन, है ना. तो u मैं जानबूझ के ऐसा लिख रहा हूँ बिकॉज वी वांट atoms to come closer to each other, and that's why we are saying that if r is decreasing na, then u will also decrease. So we are writing u decreases with decrease in r. तुम ऐसा उल्टा भी बोल सकते हो, u increases with increase in r, है ना. That's also okay, with decrease in r. इसी का उल्टा लेते हैं. If net force is repulsive, then what is going to happen? F will be positive, which means minus du by dr is positive, which means du by dr is negative, which means u is decreasing function with r. That means if you are decreasing r, then u will increase, है ना. So u increases with decrease in r. Is it okay? Any doubt? Any doubt up to this point? Now यहीं पे there was a diagram given for the interaction of any two atoms which are coming closer to each other under the force of attraction. तो वो क्या दिया गया? Diagram was like this. This was the diagram which was given for the interaction between any two particles when they are coming closer to each other and they are having both type of forces acting. Like if I am having two atoms, are they having only repulsive force or only attractive force? Like if I am saying O atom is approaching another O atom, are they having only repulsive forces, only attractive forces, both of them, none of them? What will you say? One O atom is approaching another O atom. What kind of forces are acting between them? Not see there's a diagram, just go by the basic logic. Oxygen atom or any atom is having nucleus as well as electrons, है ना? So if I'm having nucleus and electron, and if I'm having another atom which is also having nucleus and electron, what kind of forces we are expecting here? Electron और nucleus के बीच में attractive, है ना? वैसे ही this will attract this one. इन दोनों के बीच में भी attractive होगा. But what about the two nuclei? They'll be having repulsive forces, है ना? इन दोनों के बीच में repulsive. Similarly, what about these two electrons? इन दोनों के बीच में again repulsive, है ना? And that's why we say that कि whenever two atoms are approaching, whatever you saying ना कि bond बनता क्या होता है, वो हम लोग बात करेंगे whether there is going to be electron का transfer or they are going to share the electron, and what do you mean by sharing of electrons? We'll talk about those things. But right now we are just understanding in terms of physics. ठीक है? What kind of forces are acting between the two atoms if they are approaching with each other, towards each other to form the bond, है ना? तो हो क्या रहा है ना, when they are at infinite distance, तो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, we are going in this direction. That means we are decreasing r. ठीक है? Distance between them is getting decreased.
When they are at infinite distance, by default we consider that the net potential energy is net potential energy at infinite distance is 0. ठीक है? When they are approaching each other ना, we say that कि at a larger distance they'll always have attractive force. जरा देखो यहाँ पे slope क्या आ रहा है. Mathematically, if you are not clear about anything, just ask me. ये देखो, this is the slope है ना. Slope का मतलब क्या होता है? Whatever angle it is forming ना, if this is theta, तो tan theta is the slope है ना. So we can say that this theta in this case is less than 90 degree, which means tan theta will be positive है ना. And ये slope जो है du by dr क्या होता है? Du by dr is slope ना. So we are saying that du by dr is positive, which means minus du by dr is negative, which means force is negative. What does it mean? It means the net force is attractive force. Na? Is it okay? Any doubt? Now you see that if the atoms are coming closer to each other, तो मतलब मान लो एक एटम यहाँ बैठा हुआ है, दूसरा एटम यहाँ से आ रहा है, ठीक है? It is approaching to the other atom. So internuclear distance is decreasing, है ना? तो R is the internuclear distance. We are calling this one as internuclear distance. Now we are saying that when it is trying to approach the other atom, na, initially the potential energy is falling because force is attractive, and that's why ये जो बीच का ये जो मिनिमा आ गया है ना, इसके पहले every time the slope is positive, so du by dr is positive, so minus du by dr is negative, and that's why force is negative. That means attractive force is acting. तो अभी जब infinite distance पे छोड़ेगा तो they'll be coming closer to each other by default, है ना? You don't have to put any energy to it. It will be by default approaching each other, so they'll be attracted towards each other, so they are getting closer to each other. Now what about this point जहां से ये आगे बढ़ रहा है, मतलब they are coming very close to each other at a particular distance. Now the force of repulsion will become the dominant force. जरा ये जोन देखो, ये जो दूसरा जोन है इसको देखो. See this one. यहाँ पे देखो slope is positive because this angle is becoming, किसी भी एक पॉइंट को ले लो और वहां से टेंजेंट ड्रॉ करो. this angle, if this is alpha ना, so this alpha is greater than 90 degree. And if I am having alpha greater than 90 degree, tan alpha will become negative. And if it is negative, then we'll say that कि यहाँ पे du by dr is negative, which means minus du by dr is positive, which means force is positive. And force positive का मतलब है this is repulsive force, है ना? And that is causing increase in the potential energy. Any doubt? So whenever you are having in the complete course, many times it will be discussed that कि जब attraction होता है तो क्या होता है, तो we'll say that कि potential energy is decreasing, the system is becoming stable, more stable. If the repulsive force is acting, then potential energy will increase, and then the system will become less stable. तो ये पूरी कहानी बार बार ऐसा होगी कि whenever the potential energy is falling, stability is increasing, potential energy is increasing, that means energy stability is decreasing. Any doubt up to this point? तो we have got two zones. अब देखो यहाँ बहुत ही क्लियरली यहाँ इंडिकेट किया हुआ है दैट इन दिस जोन मिनिमा के आगे वाला आर में द नेट फोर्स इज अट्रैक्टिव और मिनिमा के बाद वाला जोन में नेट फोर्स इज रिपल्सिव. अंडरस्टैंड दैट इफ आई से दिस वाज द पॉइंट जहां पे मिनिमा आने वाला था एंड एटम्स आर अप्रोचिंग, लाइक एक को मैंने स्टैटिक ही रखा है, दूसरे को मैं अप्रोच करवा रहा हूँ. अभी तो अट्रैक्टिव फोर्स आ रहा है, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, यहां से यहां आया, एंड देन अभी भी इसके पास कुछ तो मोशन है ना? तो नेट फोर्स हैज बिकम जीरो, बट बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया इट विल मूव फॉरवर्ड, है ना? यहां तक जाएगा, बट यहां जैसे ही आया ना, अब इस पे रिपल्सिव फोर्स लगेगा तो फिर ये इधर जाएगा. आफ्टर रीचिंग दिस पॉइंट अगेन बिकॉज ऑफ इनर्शिया इट विल गो इन दिस डायरेक्शन, है ना? तो व्हाट वी से, पहली बात तो वी से दैट द बॉन्ड विल बी फॉर्म्ड एट दिस डिस्टेंस, एंड दैट्स व्हाई वी कॉल दिस डिस्टेंस एज bond length of the bond which is formed between the two atom. And ये जो नीचे जा रहा है ना, ये जितना मैग्नीट्यूड है, this is the fall in potential energy from infinite distance to this distance. So this is called bond enthalpy, this magnitude which we have to take with positive sign. Okay? तो हम लोग बोलते हैं कि बॉन्ड जब बनता है तो एनर्जी रिलीज होती है. If the energy released is significant, then we say that
the bond has been formed. Any doubt? Any doubt? तो यहाँ से the final conclusion of this point is whenever a bond is being formed, I'll write that as a note. A chemical bond between two atoms is formed as a result of decrease, or I'll say significant decrease. Decrease in. Sir, can we Huh. say that whenever a bond is formed, energy is released? Yes, because system की energy is decreasing, so definitely that much energy is getting released, है ना? So, the amount of energy depends on how strong the bond is. Yes, very good. So stronger bond form होगा तो ज्यादा energy release होगी. That's why we are saying that system will be more stabilized as a result of formation of stronger, है ना? So I'll add that also as a result of significant decrease in potential energy, which causes release of energy. That's why we say that bond formation is always exothermic process. Okay, I'll write that also. Bond formation, exothermic, you know, exothermic, endothermic. Bond formation is exothermic. Exothermic का मतलब है heat will be released in that, energy will be released in that, है ना? Exothermic, while breaking of bond is endothermic. So if you want to separate them, you need to provide energy to it, है ना? It will be consuming the energy. So while breaking of bond is endothermic. Any doubt up to this point? Any doubt? If you have not understood anything, just ask me. Sure, so let's move then. Now, what kind of bonds we are going to talk about? So, पहली बात है basic जो classification, that is in between primary and secondary. Basically, primary bonds are the real bonds. Secondary bonds को देखो मैंने secondary forces भी लिखा है. We'll talk about that at the end of lecture. But whatever interaction is not primary bond will be called a secondary bond or secondary force. Okay, तो primary bond कौन से? Covalent, ionic and metallic. These three are considered to be the primary bonds. ठीक है? What is covalent bond? So definitely it is, जो तुम लोगों को पता भी है basic, that it is formed as a result of sharing of electron between the two atoms, है ना? That is the basic definition. So like if I am having two Cl atoms approaching with each other, each Cl is having 7 electrons in its valence shell, है ना? Valence shell का मतलब outermost shell जो है, it is having ns2np5 configuration, है ना? तो ns2np5 का मतलब है it has got 7 electrons, and that's why अभी देखो अब बेसिक थ्योरी जो है वो ऑक्टेट थ्योरी बोलते हैं ना, स्टार्ट में जो आया था, बाद में ये रिजेक्ट भी हो गया. In many molecules it is still valid, but not in all the molecules, and that's why it was rejected, and then they move forward कि ठीक है और क्या रीजन हो सकता है. But like I told you, जो potential energy वाली कहानी बनाए हैं, that is always valid. Okay, so यहाँ पे क्या हो रहा है? It has got 7 electrons in its valence shell, है ना? 7 electrons are there. इसके पास भी देखो 7 electrons are there. Now, in order to complete their octet, na, that means in order to complete their inert gas configuration, each atom is requiring one extra electron, है ना? अभी क्या है कि one electron is taken by chlorine by the from the another chlorine atom, ना, तो इसका तो 8 हो जाएगा, उसका 6 हो जाएगा. That's why they decided कि we are not going to have complete transfer of electron. We'll be sharing one electron with each other, है ना? So one electron will be given by the first chlorine, another electron will be given by the second chlorine, and that's how both of them will be completing their octet. Is it okay? So what is happening here? Cl is having one electron यहाँ पे, बाकी को मैं cross से दिखा रहा हूँ, just to identify what is being shared. And another chlorine is also having 7 electrons. Now we'll say that the shared electrons are the part of both the chlorine atoms. So it's like this.
तो वी आर गोइंग टू से दैट, और इसी को अब शॉर्ट में कैसे दिखाया जाता है, वी इंडिकेट इट लाइक one electron pair shared between two atoms will be represented by one line that is called a single bond, है ना. So we'll call it a single bond. Why we are studying these theories even if they are not in syllabus? Because we are going to get the introduction of these names: single bond, lone pair, pi bond, sigma bond. ये सब सीखेंगे अभी. These are called lone pairs. So this will be called a lone pair of electrons, है ना. This is another lone pair. This will also be called lone pair. This will also be called lone pair. So we are saying that as a result, we are saying that in Cl2 क्या क्या मिल रहा है, तो we have got a single bond, and whenever I say a single bond, that means two electrons are in sharing, है ना, one from both sides, है ना. A single bond is present and three lone pairs, है ना. दोनों पे देखो तीन तीन दिख रहे हैं ना. Three lone pairs are present on each Cl atom. So total 6 electron lone pairs are there. Any doubt? अब इसी में if I ask you about O2, if I say, if I have to discuss the structure of O2 according to this same theory, I have got O atom which is having 6 electrons in its valence shell, है ना. O का configuration देखो क्या होता है. We have got 1s2, 2s2, 2p4, है ना. So this is called valence shell. The outermost shell is called valence shell. So valence shell is having 6 electrons, है ना. And that's why we'll say that it has got 6 electrons. So I'll be representing it like 1, 2, 3, 4. या चलो ऐसा दिखा देता हूं मैं. If it has got 1, 2, and इधर मैंने डॉट से दिखा है. You must be knowing why I'm showing it like that, because each atom will be requiring 2 more electrons to complete the octet, है ना. 8 electrons पूरा करना है in valence shell. 8 electron क्यों पूरा करना है? Because after getting that it will be getting inert gas का configuration, ना. तो ऑक्सीजन के ठीक आगे नियॉन है which is having 8 electrons in its second shell, है ना, which is the valence shell. And that's why in order to achieve that they have to share 2 electrons from both sides, and that's why we'll be saying that अभी now these 4 electrons are part of both the oxygen atoms. So it is like this, है ना. Now, if I have to indicate it with lines, how many lines we should be putting between the two oxygen atoms? How many lines? इन दोनों के बीच में कितनी lines लगाऊं? Two lines, है ना, because two electron pairs are there, है ना. And how many lone pairs on each oxygen atom are there? यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है ना. And that's why we'll say that in O2 molecule, this will be called a double bond, है ना. We are going to call this one as a double bond. This is called a double bond between O and in O2. Okay. And we'll be saying that there are two lone pair on each atom, है ना. So what is present in O2? So a double bond is present. The two O atoms. The second thing is each O is having two lone pairs. Two lone pairs are present on each oxygen. So total 4 lone pairs are there. Let's see the third one. If I'm having N2 molecule. If you see N2 molecule, it has got a configuration of N ka configuration is like 1s2, 2s2, 2p3. So this is the valence shell.
Now if I ask you, how many extra electrons each nitrogen will be requiring to complete the octet? Can you tell me? How many extra electron nitrogen requires to complete the octet? Anyone? It is already having how many electrons? 5 है ना? 8 3 पूरा करने के लिए कितना चाहिए? 3 चाहिए ना? 3 And that's yeah. why we are saying that कि 3 चाहिए तो 3 देना भी पड़ेगा. It's like that. This is a business in which you have to give it from one end and you will be taking from another end. So यहाँ पे we are saying that कि 3 electrons must be sharing, then only they'll be completing the octet, and that's why sorry, इसको ऐसा दिखा देता हूँ. So as a result, if I have to show that कि sharing is there ना, तो I'll be showing it like कि ये कुछ ऐसा है and वैसा ही इन दोनों के बीच में we are getting something like this. और इसी को दिखाने के लिए how many lines we should draw between the two atoms? 3 electron pairs are shared, so we'll be having a triple bond with 1 lone pair on each. Any doubt in that? I'll show you one more molecule and then we'll move ahead with the remaining types of primary bonds. So now when I say, so I'll just summarize it, whatever we have discussed till now in N2 wala bhi. We are saying that a triple bond is present. We'll be calling it a triple bond because 3 lines are there. And the second point is each an atom has one lone pair. Any doubt? We can also have a molecule like HF. If I talk about HF, now if I say hydrogen, its configuration is 1s1. Will it require 7 more electrons? Anyone? If I say hydrogen is having configuration 1s1 and fluorine is having configuration 1s2, 2s2, 2p5. Now, how many extra electrons hydrogen requires to get the inert gas configuration? Just to bolo. 1. Only 1, because it doesn't have to reach to the octet. It can complete its duplet only because the next electron added will make it helium ka configuration will be given by it. Hai na? So if it is getting just 2 electrons, it will get the helium ka configuration, which is an inert gas. Hai na? So it requires only 1 extra electron to get inert gas configuration. And this will require also 1 electron. Hai na? This will also require, this requires 1 more electron to get inert gas configuration. Okay, and that's why बहुत ही clear है that H is having 1 electron and that will be given in sharing because it needs 1 extra electron, but F is having 7 electrons, so it has to give only 1 electron in sharing, and that's how they'll be forming the bond. So like in this case, it has got the completion of inert gas configuration. This also has got the completion of inert gas configuration. And now if I have to show it, it will be like there will be a single bond between H and F is having 3 lone pairs. Hydrogen doesn't have any lone pair, because it was having 1 electron which was already in sharing. So 3 lone pairs are present on fluorine. There is a single bond between H and F. There is no lone pair on hydrogen. Any doubt in this case? अब ये जो मैंने बताया, this was the type of primary bond में covalent bond. When we are talking about ionic bond. अच्छा, number of valence shell electrons के लिए I'll be giving you a chart. जरा ध्यान से देख लेना, so that because we are going to use it many times, I'll just be showing you the mainly जो covalent bond बनाते हैं ना, वो p block बनाते हैं या हाइड्रोजन बनाएगा या फिर
helium, sorry, not helium, but beryllium sometimes will be forming the covalent bond, है ना. तो इसमें से if I am saying that number of valence electron कितने हैं, तो हाइड्रोजन के लिए 1 है. बेरिलियम इज ग्रुप 2 एलिमेंट, इट हैज 2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. और ग्रुप 13 का 3, ग्रुप 14 का 4, ग्रुप 15 का 5, 6, 7 एंड 8. ये 8 जो है ना वो रिलेवेंट होगा. नॉर्मली यू विल बी गेटिंग कंपाउंड्स ऑफ जेनॉन. फॉर दैट वी आर गोइंग टू यूज, बिकॉज जेनॉन इज द वन एलिमेंट. क्रिप्टन भी बनाता है, बहुत रेयरली एक दो बनाता है, बट जेनॉन इज forming many molecules, and that's why we'll be saying that xenon is having 8 valence shell electrons. We'll require that also. Is it okay? Now let's go to ionic bond. Ionic bond, already you must be knowing that it is resulting as a complete transfer of one or more electron between two atoms. Like if I am having Na, which is having one extra or valence shell electrons, it cannot take 7 electrons, because it is metal. First thing, it will always have tendency to lose the electron. And chlorine is a non-metal which is having 7 electrons. It can capture 1 electron or it can share 1 electron. When it is forming the covalent bond, it will be sharing 1 electron, but when it is forming an ionic bond, it will be capturing 1 electron. But that capturing can be occurring only if the another atom is metal, which has high tendency to release its electron. And that's why when we say ionic bond, it will be resulting as a complete transfer of one or more electrons from one atom to the other, and that is resulting in the formation of cation and anion. Any substance having plus charge will be called cation. Any substance which is having negative charge will be called anion. And that electrostatic force of attraction between that cation and anion formed is called ionic bond. Any doubt? Now what is happening here? If I'm having calcium, it is having 2 extra electrons. It has to lose 2 electrons, but chlorine is having tendency to capture only 1 electron. And that's why when calcium will be forming ionic bond with chlorine, na, 2 chlorine atoms are going to capture 1 electron each from the calcium. And that's how we'll be getting calcium chloride. ये जो बना है ना यहाँ से, इसको हम लोग लिखते हैं CaCl2. One calcium cannot form an ionic bond with one chlorine. It has to take 2 chlorine atoms, which will be releasing, calcium will be releasing its 2 electrons, 1 to each chlorine atom, and that's how it can form CaCl2. Is it okay? A third kind of प्राइमरी बॉन्ड इज मेटेलिक बॉन्डिंग. बहुत शॉर्ट में पढ़ना है, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है. नॉट इन सिलेबस. मैंने दिखाया भी सिलेबस बहुत ज्यादा वो एक तो मेंशन भी नहीं है, थोड़ा बहुत कहीं कहीं आता है काम. जैसे डी एंड ए ब्लॉक में जाएंगे तो वहां पे इट विल बी यूजफुल. सो बेसिक पॉइंट क्या है? इफ आई एम सेइंग दैट कि आई एम हैविंग अ क्रिस्टल ऑफ सोडियम इटसेल्फ, इट इज हैविंग सम काइंड ऑफ इंटरेक्शन, है ना. व्हाट काइंड ऑफ इंटरेक्शन इट इज हैविंग? तो वहां पर हम लोग बोलते हैं इन मेटल्स दे आर हैविंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स व्हिच आर फ्री टू मूव इन इट्स क्रिस्टल. When they are free to move in the crystal, na, so that those electrons are going to be पहली बात तो those are called free electrons or mobile electrons, and these electrons will be attracted by all the nuclei present inside the crystal, and that interaction is called metallic bond. Is it okay? इसमें एक दो पॉइंट सिर्फ समझने हैं. मेटल, you always get a particular type of luster in metals, है ना. शाइनिंग दिखता है मेटल्स में नॉर्मली. दैट शाइनिंग इज कमिंग बिकॉज ऑफ व्हाट? तो वी से दैट दो चीजें हैं. पहली बात तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की बात होती है, और दूसरा ये मेटालिक लस्टर की बात होती है. तो बिकॉज ऑफ दिस फ्री इलेक्ट्रॉन्स, मेटल्स आर हैविंग गुड कंडक्टिविटी, है ना. दैट्स वन पार्ट. बिकॉज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री टू मूव, तो अंडर द applied electric field they'll be moving in one particular direction, and that will be causing the conductivity of the towards the electricity or electrical conductivity. The second thing is metallic luster. ये क्या होता है? तो हम लोग बोलते हैं because of these mobile electrons ना, when the energy is falling over the surface of metal, these electrons will be excited to the next energy level, and when they are de-excited, they'll be releasing the energy continuously, and that is resulting in the metallic luster. Shining जो आ रहा है वो release of that energy because of continuous excitation followed by de-excitation of mobile electrons से आता है. Any doubt up to this point? Metallic bonding में इससे ज्यादा नहीं पढ़ना है. एक चीज जस्ट इतना जानना है कि ज्यादा नंबर ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, ज्यादा नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ मेटालिक बॉन्डिंग विल बी मोर, है ना. तो मेटालिक बॉन्ड का स्ट्रेंथ जो होता है ना, इट्स स्ट्रेंथ is proportional to number of valence shell electrons of metal. Any doubt?
एंड दैट्स व्हाई मेटालिक बॉन्डिंग जो होता है ना वो एस ब्लॉक से ज्यादा स्ट्रॉन्गर डी ब्लॉक में मिलता है, बिकॉज डी ब्लॉक एलिमेंट्स आर हैविंग ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देयर. अच्छा, डी ब्लॉक के लिए व्हेन वी से वैलेंस शेल वी इंक्लूड n-1d एंड ns, दोनों को लेते हैं. ठीक, एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? चलो, एक जो थ्योरी मैंने बहुत ही बेसिक पहले से बता दिया, वी आर गोइंग टू डील विद ऑक्टेट रूल नाउ. तो जो ऑक्टेट रूल था उसका बेसिस क्या था, ऑलरेडी आई टोल्ड यू दोज थिंग्स, ऑलरेडी एक्सप्लेन दैट, तो आई विल बी मेंशनिंग द पॉइंट्स नाउ. So when we say octet rule, atoms by sharing or transferring one or more electron complete their inert gas configuration. हाइड्रोजन के लिए it will be trying to complete its duplet, है ना. तो जब वो inert gas configuration is being completed by achieving 8 electrons, it is called octet completion. When it is achieved by reaching 2 electrons, it is called duplet completion. तो हाइड्रोजन is worried about only duplet, but बाकी elements जो होंगे ना, they'll be trying to complete their octet, and that rule is called octet. Why we are saying that? Why they'll be completing their octet? Because we are talking about the configuration of inert gas. Inert gases are inert because that means they are non-reactive. Why they are non-reactive? Because they are stable. Yeah? So we say that the inert gas configuration is a stable configuration, and anyhow, if the atom is reaching that configuration, it will be considered to be a stable configuration. So atoms are forming molecule by transferring or by sharing one or more electron to reach the inert gas configuration. That is called octet rule of bond formation. Every pair of shared electron is called a bond pair, and every pair which is unshared is called a lone pair. है ना? Any doubt in that? Any doubt in this case? Now I'll be giving you a method which is considered to be the Lewis structure draw करने का कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के लिए मेथड कहा जाता है. इट इज अ मैथमेटिकल मेथड, नॉट ऑलवेज वैलिड, बट मोस्ट ऑफ द मॉलिक्यूल जो हम लोगों को पढ़ना है ना उसके लिए आ जाता है, ये वैलिड हो जाता है. उसका एक मैथमेटिकल फॉर्मूला आई विल बी गिविंग यू दैट, एंड देन वी विल डिस्कस की हाउ टू ड्रॉ द लुईस स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स. तो इसके 3-4 स्टेप्स हैं. तो फर्स्ट स्टेप इज कैलकुलेशन ऑफ 5 नंबर्स. आई विल गिव यू दोस फॉर्मूला. क्या करने का है, whenever you have been given ना, जैसे मान लो किसी ने बोल दिया कि I have to draw the Lewis structure of H2O वाटर का, ठीक है, ऐसा कुछ भी कोई भी मॉलिक्यूल दे देंगे. तो लाइक इफ आई एम गिविंग यू, एक दो सिंपल वाले लेते हैं पहले, फिर थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट करेंगे. मान लो अपने पास F2 है. आई विल बी गिविंग यू 3-4 मॉलिक्यूल्स. आई एम हैविंग HF, आई एम हैविंग कोई भी एक और ले लो, CO2 ले लो, H2O ले लेते हैं, ठीक है, और एक आयन भी ले लेता हूं मैं. इफ आई गिव यू CO3 2 minus, I'll take one more cation, NH4 plus. ठीक है, I've taken these 6 molecules and now I want to calculate these numbers from N1 से N5. जरा N1 का कैलकुलेशन करता हूँ. N1 is what? It is the total number of valence shell electrons of all the atoms in molecule plus magnitude of negative charge minus magnitude of positive charge if any, है ना. तो जैसे we have got F के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. अभी जस्ट हम लोगों ने डिस्कस किया. आई टोल्ड यू कि मेनी टाइम्स वी आर गोइंग टू यूज दिस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट काइंड ऑफ एटम्स. तो फॉर फ्लोरीन इट इज 7, ऑक्सीजन के लिए 6 है, नाइट्रोजन के लिए 5 है. पी ब्लॉक के लिए समझ लो कि ग्रुप नंबर -10 इज द नंबर ऑफ वैलेंशियल इलेक्ट्रॉन्स. तो ग्रुप 16 का है तो 6 है, ग्रुप 15 का है तो 5 है, ग्रुप 14 का है तो 4 है, ग्रुप 13 का है तो 3 है ना. तो वैसा ही इफ आई हैव गॉट ग्रुप 17 का फ्लोरीन है तो इसके पास 7 है, तो 7 into 2, एंड इट डजंट हैव एनी चार्ज है ना अभी, तो इसलिए 14 पे रह गया. इफ आई कैलकुलेट दैट फॉर HF, आई विल से हाइड्रोजन के लिए 1, फ्लोरीन के लिए 7, तो दैट्स व्हाई इट इज 8. कार्बन के लिए इट इज ग्रुप 14 मेंबर, तो 4 है, प्लस 2 into ऑक्सीजन के लिए 6 होता है, तो 12 + 4 16. H2O में वी हैव गॉट 1 into 2 फॉर हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन एटम्स, 6 फॉर ऑक्सीजन, तो वी हैव गॉट 8. कार्बोनेट का तुम लोग बताओ, टेल मी कार्बोनेट का N1 का वैल्यू कितना आएगा. दीज आर सम नंबर्स which are ultimately going to give you number of bond pairs and number of lone pairs. Tell me the N1 value for carbonate ion, CO3 2 minus and NH4 plus. दोनों बताओ जरा. You have got the formula in front of you. Tell me the N1 value for carbonate.
Anyone? So for carbonate, is it How much? 20? No. Anyone else? So 24. Very good. 24 is the right answer. Basically, if you see, yeah, Adi have also has given the right answers. Carbon के लिए 4. We have got 3 oxygen atoms, so 3 into 6. And then we have got 2 negative charge. If negative charge is there, we need to add that much charge, and the magnitude of that. And that's why if you calculate that 18 plus 4, 22 plus 2, 24. Okay. I think तुमने -2 कर दिया क्या? Last वाला? पता नहीं सर, मैंने कुछ Okay, calculation just नहीं check कर लो, है ना? Check कर लो. If you have got any doubt, तो पूछने का है ना? So just check that whether you have got कहाँ पे mistake हुआ, where have you got the right wrong thing, है ना? तो this is the calculation for carbonate. Anyone for NH4 plus? This is called ammonia, है ना? This is 8. called ammonium 8. ion. Okay, 8. this is ammonium ion, है ना? Can you tell me the name of this cation? Anyone? What is it called? Anyone? N2H5 plus. Okay, N2H4 क्या बोलेंगे? Anyone? This is called hydrazine. Okay, NH3 is called ammonia. Now, can you tell me the name of N2H5 plus? N2H4 is hydrazine, NH3 is ammonia, NH4 plus is ammonium ion. Very good. Hydrazine, nahi, hydrazinium. Yeah, very close Hydrazinium. to the right answer. Yeah. So N2H4 is hydrazine, so this will be called hydrazinium ion or cation. Yes. Okay, so now we are talking about ammonium ion. We have got 5 for nitrogen, 1 into 4 for hydrogen, and -1 for positive charge. Hai na? So this is coming 8. Is it okay? Any doubt? Now once we have got that ना, फिर हम लोग N2 की बात करेंगे. N2 is nothing but 2 into number of hydrogen atoms plus 8 into number of atoms other than hydrogen. So if there is no hydrogen atom, so we'll write 2 into 0. There is no hydrogen atom plus 8 into other atoms. There are 2 other atoms, so that's why it is 16. This will be 2 into there is 1 hydrogen atom plus 8 into 1. There is one fluorine atoms also, so this is 10. This will be CO2 का बताओ. Tell me the CO2 का N2 है. Okay, so all these 3 are non-hydrogen atoms, so we'll be writing directly 8 into 3, that is 24. H2O के लिए we'll get 2 into 2 hydrogen atoms are there plus 1 into 8 8 into 1 oxygen atom is there. So 8 plus 4 is 12. Okay, then we'll be writing CO3 2 minus. We have got 4 atoms which are non-hydrogen, है ना? They are not hydrogen, so 4 into 8 सीधा. So this is 32. And then for this one 4 into 2 plus 8 into 1, है ना? So that is 8 plus 8 16. Now once we got the N2 का value ना, तो N3 कैसे निकालते हैं? तो that is N2 minus N1. This is N2 minus N1. हाँ जी. सर वो CO3 2 माइनस को एक्चुअल में तो H2CO3 बोलेंगे ना? नहीं. The neutral molecule is H2CO3, but you can have sodium carbonate where you have got 2 sodium plus and 1 carbonate ion, है ना? So this is called carbonate ion. H2CO3 is carbonic acid हो जाता है. वो ये नहीं है. This is carbonate ion, है ना? अगर मैंने H2CO3 से 2 H plus निकाल दिया तो जाके will be getting carbonate ion. Okay? Okay ना? चलो N3 पे आते हैं. N3 is again यहाँ पे 24 minus 16 8 हो गया, यहाँ पे 4 हो गया. We are just doing the subtraction. 8 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया. The moment I am getting N3, now the number of bond pair is nothing but N4. So N4 is number of bond pairs. BP लिख रहा हूं मैं इसको. Okay, वो कितना आएगा? तो this is simply N3 by 2. So this is 1, यहाँ पे 1, यहाँ पे 4, यहाँ पे
2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 4. And how many lone pairs are there? So we'll say n5 is number of lone pairs. Okay, and that is n1 minus n3 by 2. So n1 is 14, n3 is 2. So we'll write 14 minus 2 by 2. So that is 6. यहाँ पे देखो n1 is 8, n3 is 2 by 2. So 6 by 2 is 3. 16 minus 8 by 2, which is 4. यहाँ पे 8 minus 4 by 2, which is 2. यहाँ पे 24 minus 8 by 2, that is 8. And यहाँ पे 8 minus 8 by 2, that is 0. Now, after getting these things, now what we are going to do, we'll be finding out कि कौन सा arrangement हो रहा है इन सारे atoms का in the molecule. So step 2 is to identify the central atom, है ना. यही सारे जो molecules मैंने दिए इसी पे काम कर लेते हैं. If I have got F2, तो if you are having 2 atoms, so there is no central atom, है ना. दो में से कौन सा सेंटर, कोई भी एक को सेंटर पकड़ा तो दूसरा सराउंडिंग बन गया. But if I am having multiple atoms, then we need to know कि what is the central atom which is bonded with the other atoms, है ना. तो जैसे CO2 में we need to decide generally the one which is having least in number ना, that is a generally I am telling you, not always. So generally the one which is least in number is the central atom. That is the general. So if I am having F2, so we'll say that कि F2 में तो कोई sense नहीं बनता, F2 या HF में there is 2 atoms only. तो we are writing कि F और F है, and we have already calculated that इसके बीच में वन बॉन्ड पेयर है, जो कि अभी पहले हम लोगों ने लॉजिक से निकाला था, अभी कैलकुलेशन से भी वही आ रहा है. देयर इज अ बॉन्ड पेयर एंड देयर आर 6 लोन पेयर्स. तो इन ऑर्डर टू वी आर गोइंग टू अलॉट दैट. तो स्टेप 3 मैं एक ही साथ बता देता हूँ. सो स्टेप 3 भी साथ में लिख देता हूँ, देन विल डिस्कस दैट कैलकुलेशन. तो नॉर्मली आई टोल्ड यू कि जनरली वी से दैट कि द वन व्हिच इज लीस्ट इन नंबर इज द सेंट्रल एटम. जनरली अगेन थोड़े बहुत एक्सेप्शंस आएंगे. Oh, sorry. Now, step 3 is distribute the bond pairs in the form of lines between the central atom and the surrounding. और उसके बाद फिर हम लोग lone pair भी allot कर देते हैं in order to complete the octet of the atoms. Other than hydrogen, hydrogen के लिए will be completing the duplet. Okay. So now we'll be talking about all these steps together. If I have got F2, अभी देखो F2 का क्या करूं मैं F और F के बीच में already we have calculated that they are having just one bond pair, है ना. N4 का जो वैल्यू है, N4 is bond pair, N5 is lone pair, है ना. तो one bond pair and 6 lone pair. तो bond pair को इन दोनों के बीच में रख दिया. Now we have got 6 lone pair. In order to complete the octet of each atom, I need to put 3 lone pair here and 3 lone pair here, na? That's how we are completing the octet. Is it okay? So this becomes the structure of F2. This is the Lewis structure of F2. Is it okay? वैसे ही HF लिया. HF में क्या होने वाला है? तो if you check that, we have got one bond pair and we have got 3 lone pair. Now tell me कैसा स्ट्रक्चर होगा? I have got H and F and we have got one bond pair. तो इसमें तो confusion ही नहीं है. Now I have got 3 lone pair. Where to put that? Anyone? Where to put those 3 lone pairs? H पे कितना? H पे how much? How many on H? 0, because its duplet is already completed. So all the 3 lone pairs will be coming here, and then we can see that कि H का duplet complete हो गया, F का octet complete हो गया, है ना. The third molecule was CO2 and then H2O. If I'm talking about CO2 and H2O, if you check that CO2 के लिए we have got 4 bond pairs and we have got 4 lone pairs, है ना. 4 bond pairs का मतलब we have got, जैसे मैंने बोला था, you need to identify the central atom. यहाँ पे पता होना चाहिए कि carbon is the central atom and both the oxygen are connected with that. And that's why अभी मेरे पास 4 है, तो दोनों के बीच में 2-2 दे दिया, है ना, even distribution. After getting that, we have got 4 lone pair. How many to put over carbon? Anyone? We have got 4 lone pairs. 0. Carbon पे 0, because 0. it has already got 4 Yes. bonds. That means its octet is completed. So we have got 4. So we need to put 2 over here and 2 over here. Right?
and that's how we are getting the loose structure of CO2. H2O में we have got oxygen as the central atom, and there are two hydrogen. Now we have got two bond pairs. If you check that, whatever calculation we have done now, and that's the beauty of math key, you are doing some calculation and you are getting the actual number of bonds and the lone pairs of the realistic molecule, है ना? So in H2O we are getting two bond pairs and two lone pairs, है ना? तो टू बॉन्ड पेयर्स है, डेफिनेटली एक एक तो रहना ही रहना है, तो एक एक दोनों पे दे दिया, तो वी हैव गॉट टू बॉन्ड पेयर्स कवर्ड. नाउ वी हैव गॉट टू लोन पेयर. हाइड्रोजन विल नेवर गेट एनी लोन पेयर, है ना? तो बोथ द लोन पेयर्स विल बी गोइंग ओवर ऑक्सीजन ओनली, है. So that's the structure of H2O. Any doubt up to this point? Now we have got carbonate and we have got ammonium ion. So if I'm having carbonate, we have got one carbon, three oxygen. And like I told you, generally the one which is least in number is the central atom. Remaining atoms are bonded with that only. And now if you check, we must be getting four bond pairs. देखो carbonate में we are getting four bond pairs and 8 lone pairs, है ना? Four bond pairs. अभी तो तीन ही surrounding है ना? तो मैंने एक एक और एक रख दिया, तो we have not covered four bond pair, तो किसी एक पे डबल दे देता हूं डबल मैं, बॉन्ड. है ना? Now we need to put, we have got, देखो total 8 lone pairs are there. How many lone pairs should be on the carbon? 0. 0, because it has got already 4 bonds, है ना? Yes. Now we have got 8 lone pairs. पहला काम यही करना है कि देखो जरा ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए this oxygen will require 2 lone pairs, है ना? Because it has got 2 bonds. This will require 3, है ना? Because it has got only 1 bond, and this will require 3. And now all the 8 lone pairs are covered. तो नंबर जो है वो स्ट्रक्चर से मैच कर रहा है. While doing that ना, I'll be talking about charge also, कि if I have to put charge तो कहाँ पे रखना है, उसकी बात आगे करेंगे हम लोग. That is called formal charge का calculation. We'll do that. But अभी के लिए इतना ही करते हैं. Now we have got nitrogen with 4 hydrogen. ठीक है? 1, 2, 3, 4. Now if you check ammonium ion का, we have got 4 bond pair and we have got 0 lone pair. 4 bond pair, तो I'll be putting it like 4 है तो 4 ऐसा put कर दिया ना. And now we have got 0 lone pair. We don't have to put any lone pair, and we can see that कि hydrogen का duplet already completed है. Nitrogen का octet is also completed. Is it okay? Any doubt? Now I'll be talking about कि ये जो कार्बोनेट आयन का 2 माइनस है ना, वो चार्ज कहाँ है, कौन से एटम पे है. NH4 प्लस का प्लस कहाँ पे है, कौन से एटम पे वो चार्ज आ रहा है. In order to get that now we have got the concept of something called formal charge. ठीक है? तो विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो कि फॉर्मल चार्ज कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो वैसे तो मैं फॉर्मूला दे रहा हूं, बट मैं एक बेटर मेथड, बहुत ही सिंपल सा मेथड बताऊंगा मैं. अगर तुमको फॉर्मल चार्ज चाहिए ना, तो न्यूट्रल स्टेट में हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स वेयर देयर फॉर द गिवन एटम. जैसे यहाँ कार्बन लेते हैं, कार्बन के पास न्यूट्रल स्टेट में इट वाज हैविंग 4 इलेक्ट्रॉन्स, है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 4 थे. अभी क्या करना है ना, फॉर ईच बॉन्ड यू हैव टू काउंट 1. तो 1, 2, 3, 4. इज इट ओके? तो वी आर डूइंग दैट कि इसका अगर फॉर्मल चार्ज चाहिए ना मेरे को, तो आई विल राइट फॉर्मल चार्ज विल बी 4 वाज इन द न्यूट्रल स्टेट एंड अभी मैंने काउंट किया 4, तो दैट इज 0. तो इसके ऊपर कोई चार्ज नहीं. नाउ लेट्स टॉक अबाउट दिस वन. इसके पास न्यूट्रल फेज में इट वाज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन्स माइनस, अभी काउंट करूंगा मैं, तो बॉन्ड के लिए 1 काउंट करना है. आई विल बी शोइंग इट विद ग्रीन. 1, 2, और लोन पेयर का ईच इलेक्ट्रॉन काउंट करना है. 3, 4, 5, 6. And that's why we are writing 6 minus 6, which is 0. Is it okay? But if I count that formal charge for this oxygen, अगर इस ऑक्सीजन के लिए मैंने बात की फॉर्मल चार्ज, न्यूट्रल में कितना 6, अभी कितना दिख रहा है, माइनस कितना करूं बताओ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो 6 minus 7 जैसे किया ना, -1 आ गया. तो दिस इज द एटम ऑन विच देयर इज -1 चार्ज. वैसे इसका भी अगर मैं चेक करूं ना, दूसरे ऑक्सीजन का भी अगेन विल बी गेटिंग 6 minus 7, सिमिलर ही है ना. इसके लिए इफ आई एम कैलकुलेटिंग फॉर्मल चार्ज, आई विल बी राइटिंग 6 minus 7 which is -1. सो वी आर सेइंग एक -1 एक ऑक्सीजन पे है, दूसरा -1 इस दूसरे ऑक्सीजन पे है. जो तीसरा ऑक्सीजन विच इज बॉन्डेड विद अ डबल बॉन्ड डजंट हैव एनी फॉर्मल चार्ज, है ना. एनी डाउट? जरा NH4 प्लस का बताओ मेरे को, वो प्लस किस पे है. कैन यू टेल मी दैट? NH4 plus ammonia का plus is present over which atom? Nitrogen or any one of the hydrogen?
इसका फॉर्मल चार्ज देखते हैं. न्यूट्रल स्टेट में हाइड्रोजन वाज हैविंग 1 वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन माइनस, अभी जब मैं काउंट करूंगा तो आई विल काउंट जस्ट 1 है ना, that's why it is 0. So that is for every hydrogen atom है ना, Fc will be 1 minus 1, that is 0. 1 was neutral state का electron, 1 is still there है ना in sharing, that means how many extra electrons it is getting है ना, वो बताते हैं. तो वैसा इसका भी फॉर्मल चार्ज 0, इसका भी फॉर्मल चार्ज 0. बट इफ आई कैलकुलेट इट फॉर नाइट्रोजन, देखो इसके पास देयर वर 5 इलेक्ट्रॉन्स इन न्यूट्रल स्टेट है ना. नाउ आई विल बी काउंटिंग फॉर एवरीवन, विल काउंट जस्ट 1 है ना. 1 2 3 4 बस. तो 5 minus 4 is +1, and that's why we are saying कि वो जो प्लस दिख रहा है ना, that is present over nitrogen. Is it okay? Any doubt? Any doubt up to this point? अच्छा, एक हिंट क्या होता है ना इसका, जब कैलकुलेट करोगे, इफ यू आर कैलकुलेटिंग द फॉर्मल चार्ज ना, एक हिंट क्या होता है ना, द समेशन ऑफ फॉर्मल चार्जेस will always be equal to the net charge over the molecule. तो देखो ना, कार्बोनेट में 2 ऑक्सीजन एटम्स आर हैविंग -1 एंड -1 फॉर्मल चार्जेस. कार्बन का 0 है, तीसरे ऑक्सीजन का 0 है. समेशन इज -2, दैट इज द चार्ज ओवर कार्बोनेट है ना. इज इट ओके? एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? नाउ आई वांट यू टू डू अ कैलकुलेशन फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रेट आयन. जरा ये करके दिखाओ. नाइट्रेट का मतलब होता है, धीरे धीरे ये नाम सब भी याद रखना होगा. नाइट्रेट का मतलब है NO3 माइनस. टेल मी दिस वन एंड टेल मी ozone which is O3. Do all the calculations. I'll give you the calculation का जो डेटा था ना, वो मैं वापस से लिख देता हूँ यहाँ पर, so that you can have ease in that calculation. I'll be giving you that. या फिर I'm showing you that. Just take the screenshot. This is the calculation. N1 to N5 वाला है ना. This was the calculation वाला part. Done. Now you try it for nitrate. N1 5 plus 3 into 6 प्लस एक्स्ट्रा चार्ज नेगेटिव है तो ऐड किया हमने. नेगेटिव का चार्ज का मतलब क्या है? इट हैज गॉट 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ना, दैट्स व्हाई वी आर एडिंग द इलेक्ट्रॉन्स. तो इफ यू काउंट दैट, वी आर गेटिंग 18 plus 5 23 plus 1 24. N2 was 2 into number of hydrogen atom which is 0 plus there are 4 other atoms, तो 4 into 8, so that is 32. इन्हीं दोनों का डिफरेंस जो होता है वो N3 होता है, तो N3 is 32 minus 24 which is 8. N4 is simply N3 by 2, that is 8 by 2 which is 4. N5 was N1 minus N3 by 2 है ना, so that is 24 minus 8 by 2 which is 8 only है ना. So these many bond pairs are there and these many lone pairs are there. Okay, understood ना? Any doubt? Once we have got that ना, तो अभी क्या करते हैं, नाइट्रोजन इज देयर, देयर आर 3 ऑक्सीजन एटम्स, तो 3 ऑक्सीजन एटम रख दिया. Now in that we have got 4 bond pair. फिर से वही कहानी है, 4 है तो फिर एक जगह डबल दे दिया, दो जगह सिंगल दे दिया ना. That's the only distribution possible. किसी एक पे डबल, बाकी दो पे सिंगल. While doing that, I'll be putting lone pair. तो अपने पास 8 lone pair है. वही पुरानी कहानी कार्बोनेट जैसी ही दिख रही है. But there is a difference. वहां पे याद करो, there was -2 charge. यहाँ पे we have got -1 charge. Can you tell me the formal charge over the nitrogen? If I ask you to calculate the formal charge over nitrogen in nitrate, can you tell me Fc on nitrogen कितना होगा? +1. Okay, because it was having in neutral state, it was having 5 electrons, and now I'll count electrons around it. Bond के लिए एक ही count करना है, तो 1 2 3 4, and that's why -4, and that is coming +1. So we are saying there is
फॉर्मल चार्ज और +1 फॉर्मल चार्ज ओवर नाइट्रोजन, दैट्स वन पार्ट। एंड ऑक्सीजन का तो हम लोगों ने किया हुआ है कैलकुलेट, तो इसके लिए अगर मैं कैलकुलेट करूंगा, इफ आई एम डूइंग दिस और दिस वन, फॉर्मल चार्ज विल बी 0। इसके लिए करूंगा तो फॉर्मल चार्ज विल बी -1। इसके लिए भी करूंगा तो फॉर्मल चार्ज, ये हम लोगों ने किया हुआ है ऑलरेडी, है ना, विल बी -1, है ना। इसका मतलब है इफ आई हैव टू रिप्रेजेंट इट ना, आई कैन रिप्रेजेंट इट लाइक N double bond O with 2 lone pairs, then O with 3 lone pairs, with O with 3 lone pairs, and then we can show it like minus, minus and plus. अब एक बात बताओ, क्या डिफरेंस हो गया? लास्ट टाइम हम लोगों ने देखा था कार्बोनेट का, यू जस्ट सी द कार्बोनेट, इफ आई एम शोइंग इट, यहीं पे दिखा देता हूं मैं। कार्बोनेट हम लोगों ने ऐसा दिखाया था ना, this was having minus, this was having minus, there was no positive formal charge over any atom, and they were having appropriate number of electron lone pairs, है ना। इस पे 3 था, इस पे 3 था, एंड यहाँ पे भी, यहाँ कार्बन पे 0 था। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन दीज टू? नाइट्रेट का चार्ज इज -1 ओनली, है ना। तो it was possible ना कि simply one atom will be having -1 charge, remaining atoms will not have any formal charge. That was the case of carbonate. If it was having -2 charge, so that -2 was distributed between 2 oxygen atoms, तो -1 और -1 आ गया। अब यहाँ -1 लाने के लिए -1 +1 and -1 that is coming. Why that is coming? Can you think about that? Okay, hint दे रहा हूं मैं। If you see the configuration of nitrogen, it is 1s2 तो है, वो काम का नहीं है अपने, क्योंकि वो वैलेंस शेल नहीं है। बट इफ यू थिंक अबाउट 2s and 2p, this is the configuration, है ना। now think about that कि नाइट्रोजन को इलेक्ट्रॉन शेयरिंग में देना है। इसके अराउंड तो 4 ही बॉन्ड दिख रहे हैं ना, तो इसने 5 इलेक्ट्रॉन, इसका 5वां इलेक्ट्रॉन किधर गया? वेयर इज द 5th इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन? इफ यू थिंक अबाउट दिस, नाइट्रोजन वाज हैविंग 5 इलेक्ट्रॉन्स इन वैलेंस शेल, है ना, but it has got 4 bonds only. If 4 bonds are there, तो 4 electrons दिया हुआ, तो 5वां किधर गया? Where is the 5th electron of nitrogen? Anyone? ऑक्सीजन पे क्या, ऑक्सीजन पे? Transfer. हाँ। So you are saying it is having ionic bond. It having ionic bond? नो नो। नहीं ना, फिर anyone else? These type of questions will clear your concepts also. तो you have to think critically about everything. ऐसा नहीं कि सर ने बोल दिया, रट्टा मार लिया, आगे बढ़ गए। You have to critically think about these things. Then only you get the clarity of the concept, है ना? Okay. नहीं ना, we have got only 4 bond pairs ना कार्तिक। देखो ना, we have got n4 calculate किया ना, that was coming 4 only. Okay. And always remember that nitrogen will never form 5 bonds. ये मैं बताऊंगा आगे why it cannot form 5 bonds. We'll talk about that. But nitrogen will never form 5 bonds. Even if it is having 5 electrons, na, it will never form 5 bonds. So we'll talk about that also. So that is also a good concept. Now what is happening here ना, होता क्या है, if you think about a normal covalent bond, तो नाइट्रोजन का अगर मान लो ये नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड है, इसने 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ दे दिया, ये नॉर्मल कोवेलेंट है बॉन्ड है, यहाँ इसने 1 दे दिया। अच्छा, एक बार को नाइट्रोजन के अलावा ऑक्सीजन का सोचो, जरा ऑक्सीजन का भी साथ में सोच लेते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन का कॉन्फ़िगरेशन इज 1s2 तो है, दैट इज नॉट ऑफ नो यूज, बट इसके बाद जो 2s आ रहा है, इट इज हैविंग 2s2 2p4, है ना, 3 4, this is 2s, this is 2p. now think about one of these oxygen जिसपे माइनस है, इसका सोचो। इसके ऊपर तो ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर अपियरिंग इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, तो फिर इलेक्ट्रॉन गया कहां? बॉन्ड में कौन सा इलेक्ट्रॉन आया? इसके ऊपर देखो, ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ लोन पेयर, है ना, 1 2 3 4 5 6। तो फिर बॉन्ड में क्या दिया इसने? एनीवन? व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट नाइट्रेट, ऊपर वाला ऑक्सीजन तो समझ में आ रहा है,
6 इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 लोन पेयर में के फॉर्म में दिख रहे हैं, 2 बॉन्ड में चले गए, दैट्स ओके। नीचे वाले ऑक्सीजन का क्या हो रहा है? व्हाई इट इज हैविंग ऑलरेडी 6 इलेक्ट्रॉन्स स्टिल देयर बट इट इज फॉर्मिंग अ बॉन्ड आल्सो बोथ द ऑक्सीजन एटम्स। एनी एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट? क्योंकि इसके कॉम्बिनेशन से ही एक्सप्लेनेशन आएगा। If you start thinking about that ना, then only you will be getting the explanation why we are getting such kind of situation. तो एक चीज तो बेसिक, चलो मैं आंसर कर देता हूँ अभी, so that in future you will be able to think about it. देखो मैंने क्या बोला, नाइट्रोजन के पास यहाँ नॉर्मल बॉन्ड एक बन गया, क्योंकि यहाँ से इधर ऑक्सीजन का भी इशू नहीं है, इसका भी इशू नहीं है, ठीक है। एक ऑक्सीजन और लेते हैं। ऑक्सीजन वाज हैविंग 6 इलेक्ट्रॉन बट वी हैव गॉट नाइट्रेट आयन NO3 माइनस, तो समहाउ 1 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इज देयर ना, वो इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर है, एंड दैट्स व्हाई एक इलेक्ट्रॉन इसने बॉन्डिंग में दे दिया बट स्टिल इट विल हैव 6 इलेक्ट्रॉन, दैट्स ओके। तो जो माइनस चार्ज था ना नाइट्रेट का, दैट वी हैव कवर्ड कि वो इस ऑक्सीजन के ऊपर था, इज इट ओके? दैट्स कवर्ड। बट नाउ if I'm thinking about this oxygen and the nitrogen, now nitrogen has given its 3 electron in these 3 bonds, now it has got 2 electrons remaining, है ना? अभी जितना नहीं बना है उसके हिसाब से इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन है और इसके पास है 6 इलेक्ट्रॉन, okay? Now oxygen requires 2 more electrons to complete the octet, and nitrogen will be needing 1 bond only to form the octet, है ना, to complete the octet. एंड दैट्स व्हाई इनके बीच में एक अलग सा ही अरेंजमेंट है। वो क्या अरेंजमेंट है ना, दे हैव डिसाइडेड दैट इस बार बॉन्डिंग तो करेंगे बट ये जो बॉन्डिंग होगा ना, इसमें बोथ द इलेक्ट्रॉन्स विल बी कमिंग फ्रॉम नाइट्रोजन इटसेल्फ, both the electrons will be coming from the nitrogen itself. That's how nitrogen will have only 4 bonds and oxygen will have completion of octet without giving any electron, है ना? अच्छा dative bond फिर। Yes, that is called a coordinate bond or a dative bond. Okay, this type of bond is called a coordinate bond or a dative bond. So this is another covalent bond only. It is a type of covalent bond only, but इसमें क्या है ना, दोनों electron will be coming from the same atom. Any doubt in this case? Any doubt? तो वही जो एरो है ना, उसी को प्लस माइनस से भी दिखा देते हैं. That's another way of representing it. Any doubt up to this point? तो I'll be giving you that point जो अभी हम लोगों ने सीखा about the coordinate bond. And then we'll talk about ozone also. So when we are talking about normal covalent bond, it will be having 1 electron coming from each bonded atom. But if I am having coordinate bond, both the electrons, not E, both the electrons of the bond pair will be coming from one bonded atom only. Another atom will not give you any electron, but it will be having sharing of those electrons. इसको मैं normal language में कैसे समझाता हूँ? Ionic bond. मेरे पास रोटी है, तेरे पास सब्जी है, मैंने तेरी सब्जी छीन ली. This is called ionic bond. Okay? Covalent bond. मेरी रोटी तेरी सब्जी दोनों मिलके खाते हैं. ठीक है? Coordinate covalent bond. तेरी सब्जी तेरी रोटी अब दोनों मिलके खाते हैं. It's like कृष्ण सुदामा वाली जोड़ी है ना. कृष्ण was rich, सुदामा was poor. सुदामा के पास कुछ नहीं था, कृष्ण के पास सब कुछ था, लेकिन दोनों मिलके एंजॉय कर रहे थे ना. Okay, so now these are the 2 types of covalent bonds, normal covalent bond and coordinate bond. Abhi now I'll be giving you the idea so that in future whenever such type of situation will be coming na, particularly for nitrogen and oxygen, I told you one line that nitrogen will never form 5 bonds. Why it is happening? If you see the configuration, the answer lies in that only. Can you tell me the answer? Why nitrogen can't form the 5 bonds with this configuration? सिंगल इलेक्ट्रॉन है, एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा. सिंगल इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा. सिंगल इलेक्ट्रॉन एक नॉर्मल कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा. ये 2 इलेक्ट्रॉन जो है ना, इट डजंट हैव एनीथिंग कॉल्ड 2D. 2D डजंट एग्जिस्ट, है ना. दिस डजंट एग्जिस्ट. 3D आता है लेकिन 2D नहीं होता है ना. एंड दैट्स व्हाई व्हाट वी आर सेइंग, इफ इट डजंट एग्जिस्ट, तो नाइट्रोजन डजंट हैव एनी ऑप्शन ऑफ एक्साइटेशन ऑफ इट्स 2s इलेक्ट्रॉन इनटू D इलेक्ट्रॉन्स, है ना.
because of unavailability of the d orbital. Is it okay? In the valence shell. And that's why इसका नॉर्मल तरीका क्या होता है, नॉर्मली इट विल बी फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स. ठीक है, नॉर्मली जैसे अमोनिया है उसमें इट हैज फॉर्म 3 बॉन्ड्स. ठीक है, तो ऐसे नॉर्मली जितने भी बॉन्ड्स बनेंगे ना, तुमको देखोगे वहां पर वो 3 बॉन्ड्स बनाएगा. इफ इट इज फॉर्मिंग द फोर्थ बॉन्ड और इफ इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड्स जैसा कि नाइट्रेट में दिख रहा है, तो इफ इट इज फॉर्मिंग 4 बॉन्ड, one of them must be a coordinate bond in which it will be giving you both the electrons. That means it will be giving electron pair in the sharing. Is it okay? Is that clear? So that's why I've given you this point. This is important one. Nitrogen generally forms 3 normal covalent bond and there will be one lone pair over it. जैसे अमोनिया मैंने बोला, if I'm having NH3, तो अमोनिया में इधर there are 3 hydrogen and there is a lone pair over it. है ना? That is the normal case. But if nitrogen is forming 4 covalent bond, like I told you nitrate में इसने 4 बॉन्ड बनाया हुआ है, तो वहां पे I told you कि one of them must be a coordinate bond. Is it okay? Any doubt? Any doubt here? Similarly, oxygen generally will be forming 2 normal covalent bonds generally. जैसे अभी देखो इसके ऊपर हम लोगों ने जितने मॉलिक्यूल देखे, ऑक्सीजन का देखो कितना बॉन्ड है, ईच ऑक्सीजन इज फॉर्मिंग ओनली 2 बॉन्ड्स है ना. CO2 में देखो 2 ही बना रहा है, कार्बोनेट में बना भी रहा है, जनरली 2 बनाता है. अगर सिंगल बॉन्ड है तो अनायन था, उसके ऊपर माइनस चार्ज था ना. वाटर में देखो इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड विद 2 सेपरेट एटम्स, बट स्टिल इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स ओनली है ना. तो जनरली इट विल बी फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स विद लोन 2 लोन पेयर्स ओवर इट. बट इफ इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, तो नॉर्मली जैसे मैंने बताया, इफ आई एम हैविंग O2 तो इट इज फॉर्मिंग ईच ऑक्सीजन इज हैविंग अ डबल बॉन्ड है ना. जनरली ये ऐसा ही बनाएगा. वाटर में देखो इट इज फॉर्मिंग 2 बॉन्ड्स ओनली है ना, देयर आर 2 लोन पेयर्स ओवर इट. ठीक है, बट इफ इट इज फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, समवेयर यू कैन फाइंड दैट कि ऑक्सीजन का 3 बॉन्ड दिख रहा हो. इफ ऑक्सीजन एटम इज फॉर्मिंग 3 कोवेलेंट बॉन्ड, देन वन ऑफ दीज बॉन्ड्स मस्ट बी अ कोऑर्डिनेट बॉन्ड. अगेन सेम एक्सप्लेनेशन, एक बॉन्ड इससे बना है नॉर्मल कोवेलेंट, दूसरा इससे बना है, तीसरा बनाना होगा तो ये इसी से बनाएगा. इससे ज्यादा क्यों नहीं बनाता है, बिकॉज चौथे वाले की एनर्जी काफी कम हो जाती है, वहां से वो बॉन्ड फॉर्मेशन विल बी वेरी डिफिकल्ट. एंड दैट टू ऑक्सीजन बीइंग द second most electronegative atom, it will have very less tendency to donate its electron है ना. इट कैन ऑलवेज हैव शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जब वो मेटल के साथ आता है डोनेट करते हैं तो 2 डोनेट करते हैं, ऑक्साइड बनाता है ना. नॉर्मली अनपेड इलेक्ट्रॉन डोनेट कर लेता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट नहीं करना चाहता. बट वी हैव गॉट वन एग्जांपल, जैसा मैंने बताया कि व्हेनेवर ऑक्सीजन इज फाउंड टू बी फॉर्मिंग 3 बॉन्ड्स, ओजोन देखो जरा कैलकुलेशन करके, जस्ट चेक द कैलकुलेशन हियर. इफ आई डू द कैलकुलेशन N1, वी हैव गॉट 3 ऑक्सीजन एटम्स तो 18 आ गया. N2 का वैल्यू, वी हैव गॉट all the 3 atoms are non-hydrogen atoms, so it has become 24. N3 will be difference of these two, so that is 6, and 4 is just N3 by 2 है ना. So this is 6 by 2, which is 3, so 3 bond pairs will be there. And N5 was N1 minus N3 by 2, so that is 18 minus 6 by 2, which is 6. So these many lone pairs must be there. Now if I am having 3 oxygen atoms, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा, एक यहाँ रखा. Now we have got 3 bond pairs. अब यहाँ पर कई बार बच्चों का क्वेश्चन आता है कि सर ऐसा क्यों नहीं कर देते है ना. दैट कैन बी वन ऑफ द क्वेश्चन. ऐसा भी तो हो सकता है, बट वी नीड टू नो कि ये कहानी जो आ रही है ना, ये ऑब्जर्वेशन के बाद आती है. बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि इफ इट इज अ 3 मेंबर रिंग ना, इट विल बी हैविंग वेरी हाई एंगल स्ट्रेन, वो पढ़ेंगे बाद में हम लोग, तो वहां भी नहीं जा रहे. बट डेफिनेटली इट वाज ऑलरेडी ऑब्जर्व कि ऐसा जो सेंट्रल एटम है दैट इज ओनली फॉर्मिंग बॉन्ड्स विद अदर एटम्स. दैट्स द कंसेप्ट है ना. इफ इट इज नॉट द केस, आई विल टेल यू कि कहां पे ऐसा नहीं है. बट राइट नाउ व्हाटएवर वी आर अंडरस्टैंडिंग नाउ, व्हाटएवर वी आर लर्निंग, that will be having one central atom bonded with all the other atoms. They will not have, other surrounding atoms will not have any other bond. ठीक है, they'll all be bonded with central atom only. तो जैसे ये दोनों सराउंडिंग मैंने लिया ना, they'll be bonded with oxygen only. Now we have got 3 bond pair, तो किसी एक पे डबल दे दिया, किसी एक पे सिंगल दे दिया. Now I'll be putting octet complete करने के लिए I'll be putting appropriate number of lone pairs. तो यहाँ पे 2 आएगा, यहाँ पे देखो 1 ही आएगा, और यहाँ पे 3 आएगा ना. O3 पे कोई चार्ज नहीं है, देखो दिस इज न्यूट्रल है ना. बट इफ आई कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज ना, अगेन बाय द सेम मेथड, इफ आई कैलकुलेट फॉर्मल चार्ज, इसका मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, दैट विल बी 6 न्यूट्रल स्टेट में, देन 1 2 3 4
बॉन्ड का एक एक 6, that is 0. If I calculate for this one ना, अभी already किया हुआ था ऐसा, 6 minus 1 -1. 2 3, very good. So this is 7, that's why -1. If I calculate for this one, 6 minus 1 2 +1. 3 4 5, very good. So that is +1. Again we are getting plus and minus, plus over it and minus over it, है ना? Is it a real charge? It is not a real charge. It is actually formal charge appearing because that bond is a coordinate bond. Like I told you, oxygen is forming here 3 bonds. One of them must be a coordinate bond. This single bond is the coordinate bond appearing here, है ना? So that's why इसी को represent करने का दूसरा तरीका क्या हो सकता है? We can also write, इसी को बताने का तरीका हो सकता है, we have got lone pair, double bond यहाँ, और यहाँ इसको ऐसे दिखा देते हैं. इसको दिखाने का तरीका क्या है? The donor will be having the tail of the arrow. The acceptor, that means the one which is not sharing its electron, will be the receiver, and that's why it will be going from donor to acceptor wala. It is not the complete transfer. It is not ionic bond. Always understand that it is not ionic bond. It is a covalent bond only. But the direction of the coordinate bond will be from donor to acceptor. Donor ka matlab not complete donation. It is giving its electron pair in sharing. The one which is not giving any electron pair but still getting 2 electrons in the form of sharing will be the acceptor, will be called the acceptor. So it will be going from donor to acceptor. Is it okay? Any doubt? Any doubt up to this point? No, whatever we have learned so far ना, it has got some drawbacks. That's why it was rejected, है ना? Octet rule की कहानी जो है, वो octet अगर complete नहीं हुआ तो इसको हम लोग बोलेंगे कहानी गड़बड़ है ना? So therefore, what are the limitations of these rules? पहला है एक्सपेंडेड ऑक्टेट और हाइपर वैलेंसी. एक बार जरा जो काम किया है ना उसी को SF6 के लिए करके देखो. SF6 के लिए आई विल बी डूइंग द सेम कैलकुलेशन. जरा देखो जो सीखा है अभी. N1 का वैल्यू इट विल बी सल्फर के लिए 6 + 6 into फ्लोरीन के लिए 7, 42 + 6 48 है ना. N2 का वैल्यू देयर आर 7 एटम्स, 7 into 8 so 56. N3 is simply N2 minus N1, that is 8. N4 is N3 by 2, that is 8 by 2, that is 4. And then N5 will be N1 minus N3 by 2. है ना? So that is 48 minus 8 by 2, that is 20. अभी प्रॉब्लम क्या आई बताओ जरा इसमें. This is the number of bond pairs, है ना? This is bond pair and this is lone pairs. What is the problem in that? There is 1 sulfur. There are 6 fluorine. How many bond pairs we have? How many bond pairs we have? 4. 4. 1 2 3 4. बाकी का क्या करूं? गड़बड़ हो गया ना, है ना? And that's the problem with these kind of theories. इन्होंने स्ट्रिक्टली बोल दिया कि ऑक्टेट रूल फॉलो करना है, ऑक्टेट कंप्लीट करना है, बट देयर आर सम एलिमेंट्स व्हिच आर नॉट बाउंड टू फॉलो. समटाइम्स दे विल आल्सो बी फॉलोइंग. ऐसा नहीं कि हर बार नहीं करेंगे. H2S में सल्फर इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल. H2S इफ आई से ना, तो सल्फर इज हैविंग 2 बॉन्ड्स एंड इट वाज हैविंग 6 में से 2 इधर आ गया तो 4 अभी भी है इसके पास, है ना? तो दिस इज फॉलोइंग ऑक्टेट रूल. But it is not bound to follow. So there are some elements which are third or onward period wale na, they may have extended valency, extended octet, or that is also called hypervalency. They may form more than 4 bonds while doing that, and they are not bound to follow this octet rule, है ना? So that's the problem with this octet rule. So it fails, and now we'll be saying कि ऐसा बना क्यों रहा है अगर ऑक्टेट नहीं कंप्लीट हो रहा है, हाइपर वैलेंसी में क्यों जा रहा है? तो लाइक आई टोल्ड यू, जब सबसे पहले थ्योरी बताई थी ना कि इफ बाय फॉर्मिंग दोज बॉन्ड्स ultimately if the net energy of the system is decreasing significantly, it will undergo that bond formation, है ना? So actually it has to form 6 bonds. This is the real situation, but यहाँ पे हम लोगों ने 4 ही कैलकुलेट किया था ना. That's the problem in that. Any doubt? वैसे ही देखो POCl3, देखो POCl3 का स्ट्रक्चर इज लाइक दिस. इट इज फॉर्मिंग 5 bonds. Yeah, Karthik, no problem. Okay, I am about to end it only. We'll be seeing that drawbacks and then we'll end this lecture.
SF6 का ऑलरेडी बता दिया. आयोडीन तो 7 बॉन्ड बना रहा है. देयर आर 7 फ्लोरीन अटैच्ड विद दैट. ऐसा कुछ. उसके बाद PCl5 में देयर आर 5 बॉन्ड्स अराउंड Cl, अराउंड P. ऐसा कुछ जाएगा. ठीक है. तो ऑल ऑफ दीज एलिमेंट्स आर नॉट बाउंड टू फॉलो ऑक्टेट रूल नेसेसरली. दे मे follow octet rule in some of the molecules, but they are not necessarily following in all the molecules. Okay, so that's one of the uh, drawback. Second drawback is we are having some cases where we have got incomplete octet or hypovalency. First one was hyper, this is hypovalency. Like if I'm having BCl2 is having structure like this. It is not even completing its octet. It has got only 4 electrons around it, है ना. इसके पास 4 electrons बन रहे हैं, 2 इधर 2 इधर. there is no lone pair over it, है ना. वैसे BH3 में we have got only 3 bonds around boron. BF3 में we have got 3 fluorine around boron. So these are the molecules which exist, not very stable but still exist, and they are not having completion of octet of the central atom, है ना. AlCl3 का we have got this, not necessarily following the octet rule, है ना. Is it okay? So this is the second drawback, that there are a set of molecules which are not even following the octet rule again by exhibiting hypovalency or incomplete octet. They are not having complete octet of the central molecule. We can have odd electron molecules. Calculation करने जाओगे गड़बड़ हो जाएगा, because if I calculate that ना, मान लो इसके लिए मैंने calculate किया, N1 किया 5 + 2 × 6, 17 हो गए. कहानी ये है कि अगर मैंने ऑड इलेक्ट्रॉन से स्टार्ट किया है, कैन वी हैव इंटीग्रल नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर एंड लोन पेयर. क्योंकि ऑड इलेक्ट्रॉन का पेयर कैसे बनाओगे. 8 पेयर बना भी लोगे तो एक्स्ट्रा एक इलेक्ट्रॉन तो रह ही जाएगा ना. तो कहीं से भी ऑक्टेट कंप्लीशन तो नहीं होने वाला है. जस्ट शो यू प्रैक्टिकली कि क्या होने वाला है. यहाँ पे वी हैव गॉट 3 इलेक्ट्रॉन 3 एटम्स, तो 24 and 3 will become 7. अब अगर मैं यहाँ बॉन्ड पेयर निकालूंगा ना, बॉन्ड पेयर का नंबर जो है ना, दैट वाज N4, दैट वाज 7/2, which is 3.5. How can you have partial bonds, है ना. These are fractional number of bonds, है ना. Cannot explain by that, है ना. तो we'll see at the end of chapter ना, we'll see that कि इनको कैसे explain करते हैं. So we'll talk about that also. But definitely octet rule is not going to explain this. Next one. तुमने ध्यान नहीं दिया होगा, बट मैं बहुत ही केयरफुल था व्हेन आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज थिंग्स ना. जरा ध्यान से देखो. जब मैंने CO2 बनाया था ना, इफ यू सी दैट, जब मैंने CO2 बनाया था तो लीनियर बनाया था ना. सी के अराउंड दो बोथ द O एटम्स वेर एट 180 डिग्री. बट जब मैंने H2O बनाया तो मैंने उसको एंगल पे रखा है ना. दिस थिंग इज नेवर डिस्कस्ड अबाउट ऑक्टेट कंप्लीशन में. तो इसका कोई रोल ही नहीं है कि इस एंगल पे रहेगा ना. जब मैंने NH3 बताया तो ऐसा देखो स्क्वायर जैसा नहीं बनाया है ना. तो ऑल दीज थिंग्स, बिकॉज आई नो देयर शेप, बाद में हम लोग सीखेंगे कि हाउ टू गेट देयर एक्चुअल शेप. विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो. बट जब मैंने ये शेप्स बनाए ना, तो आई वॉज केयरफुल बिकॉज आई वॉज नोइंग दैट. बट ऑक्टेट रूल डजंट डिस्क्राइब दैट what will be the shape of a molecule, है ना. तो shape of molecule will not be described by that. So if you see H2O is angular, CO2 is linear, SO2 is angular. So when we say the shape कैसा रहता है, तो CO2 will be like this. ऑक्सीजन के अराउंड 2 हाइड्रोजन है तो वो एंगल पे क्यों है. सल्फर के अराउंड तो ऑक्सीजन ही है, बट दे आर एट एन एंगल. ऐसा कुछ है, ऐसा होता है. तो वाई दिस इज एंगुलर, ये दोनों एंगुलर हो गए, बट दिस इज लीनियर. और सबसे तगड़ा झटका तो इस थ्योरी को तब लगा जब इसकी बेसिस पे ही क्वेश्चन हो गया. एवरी टाइम इट टॉक्ड अबाउट द कंप्लीशन ऑफ इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन. एक दो इनर्ट गैस इससे चिढ़ गए, बोला ले मैं भी मॉलिक्यूल बनाता हूं. when inert gas configuration का completion or achievement was the target, then why any inert gas will form any molecule, है ना. It was already having inert gas configuration.
So how to talk about that? So definitely we cannot talk about the structure of XCF2 or XCF4 or XCF6 or KRF2 by octet rule, because in neutral form they were having completion of octet. So why will they form any molecule, है ना? तो दिस इज ऑब्वियसली द लिमिटेशन ऑफ द ऑक्टेट रूल. और भी है, बाकी चीजें हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे, क्योंकि बाकी थ्योरीज के भी वो लिमिटेशंस बनेंगे. जब हम लोग आगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की बात करेंगे, समथिंग कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दीज थिंग्स. बट दे आर आवर, they'll be having they will be having some drawbacks. We'll talk about that, like कलर होगा कि नहीं होगा किसी मॉलिक्यूल में. देयर इज समथिंग कॉल्ड पैरामैग्नेटिज्म, डायामैग्नेटिज्म. वो प्रॉपर्टी कैसे डिस्क्राइब करेंगे? तो ऑक्टेट रूल की तो औकात से बहुत बाहर है. तो इसलिए मैं यहाँ पर डिस्कस भी नहीं कर रहा हूँ कि दोज आर द लिमिटेशंस ऑफ द ऑक्टेट रूल. बट जो बेसिक लिमिटेशंस है, दैट मच आई हैव डिस्कस्ड टुडे. ओके, एनी डाउट? नेक्स्ट क्लास विल टॉक अबाउट समथिंग कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. That will be our next topic of discussion, जहां से ऑफिशियल सिलेबस ऑफ जेई एडवांस स्टार्ट होता है. ये तो बेसिक समझ रहे थे. we have now we are having we are familiar with bond pair, lone pair, linear shape, angular shape. ये सब वर्ड तो आ गए कम से कम, है ना, थ्रू दैट ऑक्टेट रूल. और ऐसा नहीं कि सबके सब ऑक्टेट रूल वायलेट करते हैं. वी हैव गॉट मेनी मॉलिक्यूल्स जो मैंने पहले डिस्कस किया, दे आर फॉलोइंग द ऑक्टेट रूल आल्सो. तो दैट्स व्हाई वी आर अंडरस्टैंडिंग दैट आल्सो, है ना. एनी डाउट अप टू दिस पॉइंट? एनी डाउट? चलो ठीक है, आज के लेक्चर में इतना ही करते हैं. नेक्स्ट क्लास में विल बी मूविंग विद दिस थिंग कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी. बट अगेन आई एम गिविंग यू द हिंट कि एटॉमिक स्ट्रक्चर रिवाइज कर लेना, बिकॉज वी आर गोइंग टू हैव रेफरेंस फ्रॉम एटॉमिक स्ट्रक्चर, पर्टिकुलरली द लेटेस्ट मॉडल, जिसमें मैंने शेप ऑफ ऑर्बिटल की बात की, वेव फंक्शन की बात की, साई के साइन की बात की, साई स्क्वायर को प्रोबेबिलिटी डेंसिटी बताया. Go through those things. I'll be sharing my notes of atomic structure with you also. Go through that also, particularly the latest model वाला I'm telling you, क्योंकि पहले तो more or less सबको same मालूम भी होता है. They are explaining everything similarly, almost similarly, I'll say. But latest model में it makes a difference. If you are not having a good notes now, you'll not have a good understanding also. And that's why I'm telling you, I'll be sharing the complete notes of atomic structure. But you particularly go through the latest models, which will be the last part of the चैप्टर, है ना. तो लास्ट के कुछ पेजेस को देख जाओगे. इफ यू हैव गॉट एनी डाउट, ब्रिंग इट टू मी इन द नेक्स्ट क्लास, एंड देन विल बी डिस्कसिंग, एंड देन विल मूव अहेड विद वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन द केमिकल बॉन्डिंग. इज इट ओके? चलो ठीक है, फिर आज यहीं पे क्लोज कर रहा हूँ. मैं अभी स्टार्ट किया तो कोई होमवर्क नहीं दे रहा हूँ मैं. आफ्टर कंफर्मिंग द एडमिशंस वगैरह ना, यू विल बी गेटिंग द बुकलेट आल्सो. तो आफ्टर एवरी लेक्चर आई विल बी गिविंग यू सम क्वेश्चंस in the notes, and I'll be giving you some questions from the booklet also. ठीक है? ओके, चलो फिर क्लोज करते हैं ना. हैव यू अंडरस्टूड एवरीथिंग ना एवरीवन? Yes, ये sir. सब क्लियर है ना? जस्ट आफ्टर द क्लास जस्ट गो थ्रू दीज नोट्स. आई विल बी शेयरिंग इट विद इन सम मिनट्स. नोट्स तो तुरंत मिल जाएगा. वीडियो बाय इवनिंग आई विल बी शेयरिंग द सर आप वीडियोस व्हाट्सएप पे आल्सो. भेजिए, व्हाट्सएप पे. हाँ, तो विमी मैम विल बी फॉरवर्डिंग इट टू यू. अभी राइट नाउ वी डोंट हैव द ग्रुप ना, या तो शी विल बी फॉरवर्डिंग दीज नोट्स. ओके. ओके ओके, यस, बाय एवरीवन. थैंक यू सर. Okay, bye bye. Anyone having any doubt, just you can stay here.